secret. At least somebody is. I'm like a threat to your material life. Maya is telling you, be careful of this man. He's very dangerous. You don't know what will happen to your material life with this man. How's my big brother doing? Alright? We're missing you. हम आपको मिस कर रहे थे पूछो Back to the treatment program. फिर से हम उपचार के कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं श्वास लो श्वास लो I get the forest to the आज मुझे जंगल दिया गया है मुझे उम्मीद है मैं आप लोगों को जंगल के बीच से देख पाऊंगा Krishna. Are you ready? Yes. Are you awake? Yes. Oh God. Hare Krishna. We're good? All right. All the formalities. ये सारा औपचारिकता I है love formalities. मुझे ये औपचारिकता बहुत पसंद है Hare Krishna. अरे Not really. असल में नहीं पसंद है Who is, what, you speak English? आप इंग्लिश बोलते हैं Very good. बहुत अच्छी बात है What is your name? आपका नाम क्या है पीलू Piru? Pilu. P-U? Pilu. Pilu. L. Pilu. 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 Where are you from? आप कहाँ से हैं Italia. इटली से Manja. All right. Let's get some mercy. चलिए कृपा पाने की कोशिश करते हैं We need a lot of mercy. हमें बहुत कृपा की ज़रूरत है Pray to Krishna. कृष्णा से प्रार्थना कीजिए Whatever questions you have, Krishna will answer your question. जो भी आपके सवाल हैं कृष्णा उनके जवाब देंगे Be patient. धैर्य रखिए Everything is in Krishna's time, not our time. सब कुछ कृष्ण के समय के आधार पे He हमारे knows समय what के is आधार your पे problem. नहीं। वो जानते हैं हमारी क्या He समस्या knows है what is your question. वो जानते हैं हमारे क्या He सवाल हैं knows what is your doubt. वो जानते हैं हमारे क्या He संदेह wants हैं to help you. वो हमारी मदद करना चाहते Just हैं like loving father wants to help the child. जैसे प्रिय पिता अपने बेटे की मदद हमेशा He करना चाहते brought हैं you to the Bhagavad Gita class. वो भगवद गीता क्लास तक आपको लेकर आ चुके हैं Everything is already arranged. सब कुछ पहले से व्यवस्था किया जा चुका Now है only Krishna said, touch Trinu, hear from me. आप कृष्णा से पे की बात कह रहे हैं तज्श्रिनु मुझसे Pray to श्रवण Krishna, करो pray to Gauranitai, please purify my mind and senses so I can hear what I need to hear. गौरनिताय कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि मेरे मन और मेरे इंद्रियों को शुद्ध करे ताकि मैं वो सुन सकूं जो सुनने के लिए It मैं may यहाँ not आया be हूँ what you want to hear, मुझे वो सुनने दीजिए जो मुझे मैं but सुनना Krishna चाहता knows हूँ what is best for us. लेकिन कृष्ण जानते हैं हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है So we would be a fool to leave here without our questions being answered, तो हम बेवकूफ़ होंगे अगर हम यहाँ से अपने सवालों के जवाब लिए बिना यहाँ से जाएं or our doubts to be destroyed, या हमारे संदेह खत्म हो when Krishna wants all of that to be clear. कृष्ण ये सारा कुछ साफ कर देना चाहते हैं The only impediment is us. एकमात्र रुकावट जो है वो हम ही हैं And this stupid और mind, ये बेवकूफ़ मन which generally misunderstands everything, जो सामान्यतः सभी चीज़ गलत समझता है because we are addicted, Prabhupada says, to mental speculation. प्रभुपाद बताते हैं क्योंकि हमें लत लगी हुई है मनोधर्म की We're very expert in listening to that mental speculation where Maya is whispering in the ear, हम बहुत निपुण हैं इस मनोधर्म को सुनने के लिए जहाँ माया हमारे कान में फुसफुसाती रहती है that has never really properly worked out and never satisfied result came from that. और ये कभी भी काम नहीं आया ना ही हमें कोई संतुष्टि मिल पाई इससे So we need a better information. तो हमें बेहतर जानकारी की We need a ज़रूरत higher है intelligence. आपको बेहतर बुद्धि की ज़रूरत And the है source of knowledge and intelligence, that's Krishna. और सारे बुद्धि और सारे ज्ञान के स्रोत कृष्ण And हैं। only Krishna told Arjuna, touch Trinu, hear from me. और कृष्ण ने अर्जुन से कहा था श्रृणु मुझसे श्रवण करो This hearing, it means on the deep platform, not on some intellectual mental platform. बहुत गहराई
के स्तर पे श्रवण करना, बस मानसिक that will और बुद्धि के confuse स्तर you पर नहीं। and create more questions and doubts. ये आपको भ्रमित करेगा और आपके मन में और भी सवाल उत्पन्न करेगा। So we have to go as deep as possible. तो हमें जितना गहराई से तक हम जा सकें, हमें जाने की कोशिश करनी चाहिए। And Krishna wants to help us. और कृष्ण हमारी मदद करना चाहते हैं। So you pray, we pray, तो आप प्रार्थना कीजिए, मैं that we प्रार्थना may करूँगा speak and hear properly. कि हम बोल सके और सुन सकें सही तरीके And से। gradually, step by step, mind, senses, everything will become purified. और धीरे धीरे मन इंद्रिय धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। And it says all your fear, all of your anxiety, all of your troubles will go away from you. सारा भय, सारी चिंताएं, सारे परेशानी आपसे दूर चली जाएंगी। And then Krishna will make us more peaceful. और कृष्ण हमें और शांत बना देंगे। And wherever there's Krishna, there's no fear. जहाँ भी कृष्ण है वहाँ भय नहीं है। So all fear and anxiety will leave you. सारा भय चिंता आपसे दूर चला जाएगा। And everything will become crystal clear, no more groping in the dark. सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा, फिर अंधेरे में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Krishna is supreme protector. कृष्ण परम रक्षण करता है। Only we have to learn how to surrender, serve him properly. हमें बस ये सीखना है कैसे हम उनको शरणागत कर सके, सेवा कर सके सही And तरीके then से। he will make us fearless और वो हमें अभय बना देंगे and give us step-by-step instruction how to live our life in the best way possible. और हमें एक एक कदम कदम पे हमें निर्देश देंगे कि कैसे हम अपने जीवन को Krishna सही is तरीके से Guru, जी सकते Adi हैं। Guru, कृष्ण गुरु हैं, आदि गुरु, original Guru. आदि गुरु हैं। All knowledge, intelligence comes from him. सारा बुद्धि ज्ञान उनसे आता है। And he is the Chaita Guru, Paramatma Super Soul. और वो चैत्य गुरु परमात्मा है हमारे हृदय में। Krishna says, I'm situated in everyone's heart. कृष्ण बताते हैं मैं सभी के हृदय में From स्थित me हूँ। comes knowledge, intelligence, remembrance. मुझसे ज्ञान, बुद्धि और स्मरण शक्ति आती है। So that is spiritual life. तो ये है आध्यात्मिक जीवन। Learning how to connect and hear and depend on Krishna, that is process of Krishna consciousness. सीखना कैसे कृष्ण को श्रवण करना है, कैसे उनके ऊपर निर्भर रहना है। As we become more and more expert, Prabhupada said we should take dictation from the Lord within the heart. प्रभुपाद बताते हैं जैसे जैसे हम इसमें निपुण बनते जाएंगे, हमें जो है भगवान से दिशा निर्देश लेना है हर समय। But now the message is confused. लेकिन अभी ये संदेश थोड़ा भ्रमित करने वाला It's है। not Krishna's problem, it's our problem. ये कृष्ण की समस्या नहीं है, हमारी So समस्या we है। have to cleanse and purify mind and senses तो हमें साफ करना होगा मन, इंद्रिय और चेतना को, so that we're more qualified to be able to hear and understand Krishna's message and instruction to us. ताकि हम योग्य हो पाए कृष्ण के निर्देश को श्रवण करने के लिए, उनको समझ पाने के लिए। So this is a great opportunity for us to come together and meet. तो ये बहुत अच्छा मौका है, हम एक साथ जमा हो पा रहे हैं और मिल पा And रहे I हैं। wish you all the best. मैं आप सभी को शुभकामनाएं And देता I हूँ। know if we try to be sincere and serious as possible, और हम then we प्रयास can get करेंगे। the mercy हम प्रयास करेंगे जितना ज़्यादा गंभीर ईमानदार हो सके ताकि हम कृपा प्राप्त कर सकें and blessings. और मुझे आशीर्वाद And दीजिए। everything can be solved one day at a time. और एक एक चीज़, एक एक दिन में एक एक चीज़ को हम सुलझाने की This is कोशिश gradual करेंगे। process. ये धीरे धीरे की प्रक्रिया It है। took a long time for us to get into big trouble. बहुत काफ़ी ज़्यादा समय लगा हमें इस So मुसीबत में पड़ने now के लिए। there's going to be some process how to get out of trouble. तो अब ये प्रक्रिया है कैसे हम इस समस्या से बाहर निकलेंगे। So Srila Rupa Goswami says, be confident श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं आत्मविश्वास that the रखिए process will work. कि ये प्रक्रिया काम करेगी। Be enthusiastic to practice that process, उत्साहपूर्वक रहिए इस प्रक्रिया को knowing that अभ्यास it करने will के लिए, work, जानकर इस बात को कि ये काम अवश्य करेगा। but be patient, लेकिन धैर्य बनाए be रखिए tolerant. और सहिष्णुता रखिए। And my Gurudev many times he said, pray to Krishna for power of tolerance. और मेरे गुरुदेव कई बार कहा करते हैं कृष्णा से प्रार्थना कीजिए सहन शक्ति की क्षमता के लिए, Because we have in Kali Yuga we have very little patience and tolerance. क्योंकि कलियुग में हमारे पास बहुत ही कम धैर्य और सहन शक्ति है। We have in English they say short fuse. इंग्लिश में कहावत है छोटा फ्यूज। You understand short fuse? आपको समझ में आ रहा है छोटा फ्यूज का क्या मतलब है? You light it, but the fuse is only like this. Boom, we're ready to explode, isn't it? छोटा फ्यूज मतलब थोड़ा सा आग लगा पूरा फट जाएगा वो। Somebody says something to us or looks at us in the wrong way, immediately we're ready to kill that person. Hey, what's your problem? कोई बात हमें कोई छोटी सी कोई बात कह दे या हमारी तरफ गलत तरीके से देख ले, तुरंत ही उस आदमी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। Because everyone a big false ego. कि सभी का अहंकार बहुत बड़ा है। So we have a lot of big false egos here.
तो हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े अहंकार वाले लोग हैं, So we have to try to shrink that. तो हमें इसको छोटा करने की ज़रूरत है, Then more people can fit in the room, तो और ज़्यादा लोग इस रूम के अंदर फिट हो पाएंगे, physically and mentally शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, and spiritually. आध्यात्मिक रूप से। Okay, let's chant Hare Krishna. चलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र की जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। I'm just getting warmed up with you. मैं बस वार्म अप कर रहा हूँ आप लोगों के साथ थोड़ा अभी। Sometimes the doctor comes in, he likes to talk to the patient before the surgery, right? कभी कभी डॉक्टर जो है सर्जरी से पहले मरीज से थोड़ा बातचीत करते हैं। I had a nice doctor like that. He's like really nice guy, and he talked with everything. Don't worry, everything's gonna be all right. I said, well, that's really nice, you know, before the surgery. तो सर्जरी से पहले कोई अगर डॉक्टर आकर आपसे बात करे, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, सब अच्छे से गुजरेगा, चिंता मत करिए, तो ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ऐसे। No problem. I've done this so many times. I'm कोई very समस्या expert नहीं। at it. It's not first time doing. कोई बात नहीं, मैं ये पहली बार नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बार सर्जरी कर चुका हूँ, चिंता मत करना। Almost everybody survived. ज़्यादातर लोग बच गए हैं। Oh, Krishna. I better be quiet, you know. अच्छा, मुझे शांत हो जाना चाहिए। Srila Prabhupada ki, Srila Govinda Swami, Srila Gurudev ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaura Premanande. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Govinda Swami Nityanamine.
Swami Gurudeva, Gora Govinda Swami Gurudeva. Mahaprabhu ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaura Premanande. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivraj Kachaya Shishimad Gaur Govinda Swami Srila Gurudeva ki, Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivraj Kachaya Shishimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajik Chaya Shishimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Prem Sikoho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Shri Gaura Bhakta Vrinda ki, Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kund Radha Kunda Giri Govardhana ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Navadvip Dham ki, Shri Jagannath Puri Dham ki, Ganga Mai ki, Jamuna Mai ki, Bhakti Devi ki, Tulasi Maharani ki, Shri Shri Radha Madhava ki, Shri Shri Gaunitai, Shri Shri Radha Madhava ki, Shri Shri Radha Gopal ji, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Jagannath Baladev Lady Subhadra Devi ki, Premanam Sankirtan Jagya ki, Transcendental Book Distribution ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru, Shri Gauranga Mahaprabhu. Srila Prabhupada, Srila Gurudeva. Children should be quiet. बच्चों को शांत रहना चाहिए. This is the grown-up time, not the children time. ये बड़े लोगों का काम है, यहाँ छोटे का काम है. We want to be able to hear nicely, not the chatter screaming of the children. हम अच्छे से श्रवण करना चाहते हैं, बच्चों का चहल पहल सुनना नहीं चाहते. So parents, please control them. तो माता पिता से अनुरोध है बच्चों को नियंत्रण में रखें. Control their mind and senses if it's possible. उनके मन इंद्रियों को नियंत्रण में रखिए अगर ये संभव है. Of course, we're having trouble controlling our own mind and senses, but that's another topic. अवश्य उनको खुद के भी मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होगा, तो ये लेकिन ये अलग ही बात है. So today we're going to read from Srimad Bhagavad Gita, Srila Prabhupada Bhagavad Gita as it is. आज हम भगवद गीता से पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी का भगवद गीता यथारूप. And a very important verse बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है from ये. the 10th chapter. 10वें अध्याय का. The opulence of the absolute भगवान का ऐश्वर्य is the name of the chapter. ये इस अध्याय का नाम है. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So reading Bhagavad Gita chapter 10, text number 10. तो भगवद गीता का 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 10. Can you little turn that down? Just wanted to. Please repeat. कृपया दोहराइए. teṣāṁ
satata-yuktānāṁ, bhajatāṁ, prīti-pūrvakam, dadāmi, buddhi-yogaṁ, tam, yena, mam, upayānti, teṣāṁ satata-yuktānām, bhajatāṁ prīti-pūrvakam, dadāmi buddhi-yogaṁ tam, yena mam upayānti teṣāṁ satata-yuktānām, bhajatāṁ prīti-pūrvakam, dadāmi buddhi-yogaṁ tam, yena mam upayānti teṣāṁ satata-yuktānām, bhajatāṁ prīti-pūrvakam, dadāmi buddhi-yogaṁ tam, yena mam upayānti Anyone like to try? teṣāṁ satata-yuktānāṁ, teṣāṁ satata-yuktānām, bhajatāṁ prīti-pūrvakam, dadāmi buddhi-yogaṁ tam, yena mam upayānti teṣāṁ satata-yuktānāṁ, teṣāṁ satata-yuktānām, bhajatāṁ prīti-pūrvakam, bhajatāṁ prīti-pūrvakam, dadāmi buddhi-yogaṁ dadāmi buddhi-yogaṁ tam, yena mam upayānti yena mam upayānti Anybody else? teṣāṁ satata-yuktānāṁ, teṣāṁ satata-yuktānām, bhajatāṁ prīti-pūrvakam, bhajatāṁ prīti-pūrvakam, dadāmi bhakti buddhi-yogaṁ tam, dadāmi buddhi-yogaṁ tam, yena upayānti yena mam upayānti teṣāṁ, unto them, उनमें satata-yuktānām, always engaged, हमेशा युक्त रहना, bhajatāṁ, बहादुर in rendering pure devotional service, शुद्ध भक्ति करने में, prīti-pūrvakam, in loving ecstasy, प्रेम रोमांच में, dadāmi, I give, मैं देता हूँ, buddhi-yogaṁ, real intelligence, असल बुद्धि, tam, that, वो yena, by which, जिसके द्वारा mam, unto me, मुझ में upayānti, come, आता है, they, वे. Translation and purport by Srila Prabhupada. तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. Krishna is speaking to Arjuna and through Arjuna to the rest of mankind. कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से अन्य मनुष्यों को भी. And Krishna is explaining that to those who are always engaged in serving me with loving devotion, और कृष्ण बता रहे हैं वो जो हमेशा युक्त रहते हैं मेरी प्रेम में सेवा में, I give them the proper understanding मैं उनको सही समझ देता हूँ and real intelligence और सद्बुद्धि देता हूँ by which they can come to me. जिसके माध्यम से वो मुझ तक पहुँच सकते हैं. Please repeat. कृपया दोहराइए. To those who are always engaged in serving me with loving devotion, I give them the proper understanding and real intelligence by which they can come to me. Purport by Srila Prabhupada. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. In this verse, the word buddhi-yogam is very significant. इस श्लोक में ये बुद्धि योगम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है.
We may remember that in the second chapter, the Lord instructing Arjuna said that he had spoken to him of many things. हमें याद होगा कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बहुत सारे निर्देश दिए हैं. And that he would instruct him in the way of this buddhi-yoga. और उन्होंने उनको बुद्धि योग में निर्देशन दिया. Now buddhi-yoga is being explained here. और बुद्धि योगा का अब यहाँ व्याख्या किया गया है. Buddhi-yoga itself is action in Krishna consciousness. बुद्धि योगा स्वयं में कृष्ण भावनामृत कर्म है. And that is the highest intelligence. और ये सबसे ऊंची बुद्धि है. Buddhi means intelligence. बुद्धि का मतलब है बुद्धि. This means spiritual intelligence. मतलब आध्यात्मिक बुद्धि. And yoga means mystic activities. और योगा मतलब यौगिक कार्यकलाप, यौगिक गतिविधि. Or mystic elevation. या यौगिक चढ़ाई. He's not a mystic. ये एक योगी नहीं है. He's becoming. ये बन रहा है. If he just tries, he'll become. अगर ये बस प्रयास करेगा तो ये बन जाएगा. That's special mercy. ये है विशेष कृपा. Prabhupada said, even you don't understand it, you just try. प्रभुपाद कहते हैं अगर आप नहीं समझ पाए लेकिन By फिर भी आप mercy प्रयास of करते हैं. Krishna, mercy of Vaishnavas, you'll come to understand it. कृष्णा की कृपा से, वैष्णव की कृपा से आप सब समझ जाएंगे. They're trying to help us. They want to help us. वो हमारी मदद करना चाहते हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं. That's the whole point of this verse. ये इस पूरे श्लोक का यही मतलब है. So Prabhupada says, when one tries sincerely to go back home, back to Godhead, प्रभुपाद कहते हैं कोई अगर ईमानदारी से प्रयास करे भगवत धाम वापस जाने का and takes fully to this process of Krishna और consciousness पूर्ण रूप से इस कृष्ण भावनामृत को प्रक्रिया को स्वीकार करता है in a mood of devotional service, और भक्ति के भाव में, that motivation and that action, that is called buddhi-yoga. ये उद्देश्य और ये कार्य बुद्धि योग कहलाता है. In other words, buddhi-yoga is the process दूसरे शब्दों में बुद्धि योग एक प्रक्रिया है by which one first becomes completely purified जिसके माध्यम से कोई सबसे पहले पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है and gets out of this entanglement and suffering of the material world. और इस भौतिक जगत के बंधन और दुखों से मुक्त हो जाता है. But the ultimate goal of this process of devotional service is to get Krishna. और इस भक्ति के पथ का अंतिम लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त करना. But people, they do not know this. लेकिन लोग इस बात को नहीं जानते. Therefore, the association of Krishna's pure devotees, इसलिए कृष्ण के शुद्ध भक्त का संग, Bhakta Bhagavatas, भक्त भागवत and bona fide spiritual master प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु are most essential and most important. सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा आवश्यक है. One should know that the goal is Krishna. किसी को जानना चाहिए कि लक्ष्य कृष्ण है. When the goal is assigned, then the path is slowly but progressively transversed. जब लक्ष्य चुन लिया जाता है तो पथ धीरे धीरे लेकिन आगे की ओर निरंतर बढ़ता है. And by mercy of Guru and Krishna, the ultimate goal is finally achieved. और गुरु कृष्ण की कृपा से अंतिम लक्ष्य अंत में प्राप्त किया जा सकता है. Now, when a person knows the goal of life is to get Krishna, develop love for Krishna, जब कोई जानता है जीवन का लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, but instead of going for that, is instead addicted to enjoying this karma or fruits of their activities, लेकिन इसके पीछे जाने के बजाय वो लत लगा हुआ है कर्म और कर्म के फल का भोग करने में. they know they should surrender and serve Krishna. वो जानते हैं उनको कृष्ण को शरणागत और सेवा करनी. But they're addicted to this karmic sinful activities. लेकिन उनको लत लगी हुई है इस कर्म और पाप कर्म में लगने की. So it's called the karma yoga. इसलिए इसको कर्म योग कहते हैं. When one knows that the goal of life is Krishna, जब कोई जानता है जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, but he instead takes pleasure in material mental speculations लेकिन उसके बजाय वो मनोधर्म में आनंद लेता है to try to understand Krishna, कृष्ण को समझने के लिए, then he's acting in the jnana yoga. तो वो ज्ञान योग में कार्य कर रहा है. And when one knows that the goal and seeks Krishna completely in Krishna और consciousness, कोई अगर ये जानता है लक्ष्य कृष्ण है और कृष्ण को इस कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया से ढूंढ रहा है through the process of pure devotional service, और शुद्ध भक्ति के मार्ग से, then he is acting in bhakti yoga तो वो भक्ति योग में कार्य कर रहा है or buddhi yoga. या बुद्धि योगा. So real buddhi yoga means bhakti yoga. असल बुद्धि योगा का मतलब भक्ति And योग. Krishna says, out of all of the yogis, that buddhi yogi, that
how do you say, bhakti yogi, he's the best. और कृष्ण बताते हैं सभी योगियों में बुद्धि योगी सबसे श्रेष्ठ है। And Krishna says, in my opinion, I consider that to be the topmost yoga system, yogi. और मेरे कृष्ण बताते हैं मेरे विचार में सबसे श्रेष्ठ योगिक प्रक्रिया है, सबसे श्रेष्ठ योगी है। So this complete yoga, bhakti yoga, तो ये पूरा योग है, भक्ति योग है। is the highest perfectional stage of life. ये जीवन का सबसे उच्चतम स्थान है। So it's the means and it's the end. तो ये रास्ता है और ये अंत भी है। The practice of bhakti yoga is process of purification to qualify ourselves to reach the goal, which is bhakti, which is Krishna Prem Bhakti. तो ये भक्ति योग की जो प्रक्रिया है, स्वयं को शुद्ध करना, स्वयं को योग्य बनाना, ताकि अंतिम लक्ष्य कृष्ण तक पहुंच सके, जो कि है असल में भक्ति। So Srila Prabhupada says a person may have a bona fide spiritual master श्रील प्रभुपाद बताते हैं किसी व्यक्ति के पास हो सकता है प्रामाणिक गुरु मौजूद, and may be attached to spiritual organization. और हो सकता है वो किसी आध्यात्मिक संस्था से आसक्त भी हो। But if he is still not intelligent enough to make progress, लेकिन फिर भी अगर वो बुद्धिमान नहीं है प्रगति करने के लिए, then Krishna from within, तो कृष्ण भीतर से, it's Chetu Guru, Paramatma, चैत्य गुरु परमात्मा, he gives him instructions वो उनको निर्देश देते हैं so that he may ultimately come to him, to Krishna, without difficulty. तो वो अंत में उनके पास आ सके, कृष्ण के पास आ सके बिना किसी समस्या The qualification is तो योग्यता ये है that a person sincerely and has always engaged himself in Krishna consciousness. कि कोई व्यक्ति अपने आप को पूरी ईमानदारी से कृष्ण भावनामृत कार्य में लगाए। Prabhupada says sincerity and seriousness. प्रभुपाद कहते हैं ईमानदारी से और गंभीरता से, In a mood of loving devotion, प्रेम भाव से, renders all kinds of services for the pleasure of Krishna, Krishna's devotees. सभी तरह की सेवा करे कृष्ण, कृष्ण के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। He should work, he should perform some work or activity for Krishna. उसको कोई भी कार्य कृष्ण के लिए करना चाहिए, And that work should be with love. और वो कार्य प्रेम से किया जाना चाहिए। If a devotee is not intelligent enough अगर कोई भक्त बुद्धिमान नहीं है to make progress on the path of self-realization, इस आत्म साक्षात्कार के पथ पे प्रगति करने के लिए, but is sincere लेकिन अगर वो and ईमानदार है devoted to the activities of devotional service, bhakti yoga, और वो निष्ठावान है इस भक्ति योग में लगे रहने के लिए, then the Lord himself gives him a chance to make steady progress, तो भगवान उसको मौका देते हैं ताकि वो निरंतर प्रगति कर सके, gives him the intelligence, उनको बुद्धि देते हैं वो, and ultimately how to attain him, how to get Krishna. और अंत में कैसे कृष्ण को प्राप्त कर सके। Om Jnanatamaraṅtasya Gananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. So before we talk about any process, material or spiritual, तो इससे पहले हम किसी भी प्रक्रिया के बारे में बात करें, भौतिक या आध्यात्मिक, we must always figure out what is the goal. हमें हमेशा ये पता लगाना चाहिए कि लक्ष्य क्या है। Even people who are very successful in the material life, in the business, यहाँ तक कि वो व्यक्ति जो भौतिक जीवन में या व्यापार में बहुत सफल हुए, they always write some book because people are always curious how you became so successful. वो हमेशा कोई किताब लिखते हैं क्योंकि हमेशा लोग जिज्ञासु होते हैं, उत्सुक होते हैं जानने के लिए कि ये सफल कैसे बने, How you made so much money. आपने इतने पैसे कैसे कमाए। So they have to tell what is their secret, right? तो वो मजबूर होते हैं बताने के लिए कि उनकी सफलता का रहस्य क्या है। I remember one of these writers, he said, what happened was I made every possible mistake you can make and I saw what didn't work. I failed in everything, learned by it, and then adjusted myself. तो एक लेखक ने अपनी किताब में कहा कि मैंने वो सारी गलतियाँ आपसे पहले की और उन सारी गलतियों से मैंने सीख ली और उसके बाद मैं सफल हो पाया। So they say, I just failed. I did all the failures before you. तो उसने बस यही कहा कि मैंने वो सारे असफलता मैंने पहले प्राप्त कर लिया आप लोगों से। And then I saw, oh, this is not work like that.
तब मुझे ये पता चला वो इस तरीके से काम नहीं करेगा। Then they make some adjustment, right? फिर उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट किया। But almost all of them, they talk about you have to set goals. लेकिन सभी ने एक बात की कि आपको लक्ष्य स्वीकार करना। You have to have a vision and you have to set goals. What are you trying to attain? आपकी दृष्टि होनी चाहिए और आपका लक्ष्य होना चाहिए, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। They talk short-term goals, उसमें छोटे समय, medium-term goals, long-term goals, isn't it? छोटे अवधि की, मध्यम अवधि की और लंबे अवधि की लक्ष्य होते हैं उसमें। So before you talk about process, you have to first define what is your goal, what are you trying to reach, what are you trying to achieve. तो प्रक्रिया प्रक्रिया में जाने से पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। If we are not clear and fixed on that, then we're going to be bouncing around to all types of goals, all types of processes, all type of speculation. We can get nowhere spiritually or materially. अगर हम अपने लक्ष्य को स्थापित नहीं करते हैं, फिक्स नहीं करते हैं, तो हम इधर उधर कूदते रहेंगे, अपने मनोधर्म में जाते रहेंगे और हर अलग अलग प्रक्रिया से गुजरते रहेंगे। So according to Vedic teaching, Vedic culture, तो वैदिक संस्कृति के Vedic आधार philosophy, there's only 5 possible goals. वैदिक सिद्धांत के आधार पर सिर्फ 5 ही लक्ष्य हो सकते हैं। And whatever our plans are, it fits within one of those 5 principal goals. और जो भी ये हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, ये इन 5 मूल सिद्धांतों पे It's called Purushartha, इनको पुरुषार्थ कहा जाता है। right? So Dharma, Artha, Kama, Moksha. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। Religiosity, धर्म in order to get economic development, ताकि कुछ उन्नति की जा सके, धन अर्जन किया जा सके। then when you have economic development, you can buy your sense gratification and enjoy. जब आप आर्थिक उन्नति करेंगे तो आप आनंद की चीज़ों को एकत्र कर सकते हैं और आप भोग कर सकते हैं। And when you're completely disgusted and fed up with all of that, और जब हम उन सब चीज़ों से पूरी तरह हताश हो जाते हैं, then you may just want to go for moksha. तो फिर आप मोक्ष की तरफ जाते हैं। Now Srila Prabhupada, he says in the Kali Yuga, लेकिन श्रील people are प्रभुपाद not interested in Dharma. श्रील प्रभुपाद बताते हैं कलयुग में लोगों को धर्म में कोई रुचि नहीं है And they're not interested in moksha. और उनको मोक्ष में भी कोई रुचि नहीं है। They're interested in economic development to get the money to enjoy sense gratification. Bas. उनको बस आर्थिक उन्नति में रुचि है ताकि कुछ इंद्रिय तृप्ति के साधन प्राप्त हो सके और भोग कर सके। Anyway, somehow or other, by hook or by crook, get money. सीधे तरीके से या उल्टे तरीके से, बस किसी तरह पैसे चाहिए। At least in Vedic culture, they know you have to please, pray to the gods. You have to get some mercy and blessing. You have to do some religiosity, right, in order to get some economic boon or benefit, right? कम से कम वैदिक संस्कृति में लोगों को ये ज्ञान था कि किसी देवी देवता को प्रसन्न करना हो, उनसे प्रार्थना करनी होगी और उनको पूजा करनी होगी ताकि आप कुछ तरह का धर्म कर सके, ताकि आपको कुछ धन प्राप्त हो सके। Now they have all of these pujas right now. Is it Durga Puja? Right? So all these pujas are there, right? But how many people are trying to worship? They just say, oh, here's a big party, you know? बहुत सारे पूजा होते रहते हैं यहाँ पे, जैसे दुर्गा पूजा भी आ रही है बहुत, लेकिन कौन लोग जो असल में पूजा करने के लिए लगाए हैं, वो तो सोचते हैं कोई बड़ा पार्टी होने वाला है। I remember I was in Jagannath Puri one time and they had some procession, you know, on one of, I think it was Ganesh Puja or something like that, you know? मुझे याद है एक बार मैं जगन्नाथ पुरी में था, तो वहाँ पर एक यात्रा, एक प्रोसेसन निकल रहा था, तो वो गणेश चतुर्थी ऐसा कुछ पूजा था। And they had such a sound system that when they turned it on, it blew me out of my bed onto the floor. और उनका जो साउंड सिस्टम ऐसा था, जब उन्होंने अपना साउंड सिस्टम ऑन किया तो मैं अपने बेड से उड़ के नीचे गिर गया। Seriously. And I looked, I said, oh, I was so scared. I thought it was like World War III or something was starting, you और know? ये इतना गंभीर परिस्थिति था, मुझे लगा शायद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। It was so loud, you know? ये इतना जोरदार था आवाज। And I grew up with loud music, so that's, you know, I know what is loud music. और मैं जो है इस तेज म्यूजिक में पला बढ़ा हूँ, तो मुझे पता है तेज आवाज क्या But this होती है। was from a total another realm of noise, sound, you know? लेकिन ये किसी दूसरे ही ग्रह के दूसरे ही realm का ध्वनि था। Then I looked down, and there's just one rickshaw wala, right? And he has like 16, you know, speaker system there, you know? और फिर मैंने जब बाहर देखा तो मैंने रिक्शा वाले को देखा, उसमें 16 बड़े-बड़े स्पीकर लगाकर उसने रखे थे। Right, like a mountain, you know, पहाड़ के just जैसा cranked up, you know. पहाड़ के जैसा स्पीकर लगा के रखा था। The whole building, and you know, in Orissa, it's like the old buildings. The buildings is like even the buildings were shaking, you know. और उड़ीसा में ये पूरा बिल्डिंग ही पूरा हिल रहा था।
So this isn't exactly dharma, you know what I mean? तो ये कोई धर्म नहीं है। And everybody drinking and partying, smoking, who knows, whatever, right? और सब पी रहे हैं, सब पार्टी कर रहे हैं, सब सिगरेट पी रहे हैं, ये So most people not doing dharma, let's be honest. You तो know? ज़्यादातर लोग धर्म नहीं कर रहे, अगर ईमानदारी से कहें तो। It's like they have, in Christianity, they have a Christmas, right? It's supposed to be the birth of Jesus Christ, right? It's just now there's Santa Claus bringing presents for everybody, you know? जैसे ईसाई धर्म में है जो जीसस क्राइस्ट का जो जन्मदिन होता है उसमें बस सांता क्लॉज आते हैं क्रिसमस में और अलग-अलग जगह बस उपहार बांटते हैं। So it used to be supposed to be spiritual, but nothing really spiritual about it. लेकिन इसमें कोई आध्यात्मिक नहीं है। So mostly, therefore, Prabhupada says, especially in Kali Yuga, the goals are just get money and enjoy as much as possible. Then you die. Even they have a joke like that: get money, enjoy, then you die. That's the purpose of life. प्रभुपाद बताते हैं कलयुग में लोगों का यही मकसद है, कैसे पैसा कमाया जा सके, कैसे भोग किया जा सके, बस। यहाँ तक कि कहावत भी है अंग्रेजी में कि बस पैसे कमाओ और इंद्रिय वृत्ति के साधन इकट्ठा करो और फिर मर जाओ। So how many people are looking for moksha? तो कितने लोग मोक्ष के पीछे हैं? They think if you just take some ecstasy or some drugs and some narcotics, right, that is their moksha, you know. लोग सोचते हैं आप कुछ नशीला पदार्थ ले लेंगे यही मोक्ष है। Even that they're trying to cheat what is moksha, you know. यहाँ तक कि वहाँ पे भी चीटिंग हो रही है मोक्ष में भी। But beyond that, dharma artha kama moksha is parama purushata, means supreme goal. लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी ऊपर है परम पुरुषार्थ है, यानी कि सबसे ऊंचा And लक्ष्य। that is bhakti. वो है भक्ति। So first we must fix up what is the goal. What are we trying to achieve? सबसे पहले हमें तय करना होगा लक्ष्य क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। Now Krishna says if you have many different desires, many different goals, your intelligence is going to be many branched. It's going to be splayed out. लेकिन कृष्ण बताते हैं अगर आपकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं आपके जीवन में, तो आपकी बुद्धि जो है हमेशा बटी हुई रहेगी अलग-अलग शाखाओं में। So your resolute determination to practice devotional service will not manifest itself. जो आपका दृढ़ निश्चय है भक्ति करने का, यह स्वयं प्रकट नहीं हो पाएगा। Because we've not decided in a very real deep way what is our actual goal. क्योंकि अभी तक हमने असल में अपना लक्ष्य तैयार नहीं किया है। And even when we came to Krishna consciousness, we came to ISKCON, right? We didn't come to join an institution or to, you know, get a guru or to join another culture. We're trying to figure out who is God, what is the absolute truth. तो हम भी जब ISKCON में आए तो हम किसी संस्कृति से जुड़ने के लिए, किसी संस्था से जुड़ने के लिए, किसी गुरु को पाने के लिए यहाँ पर नहीं आए। हम ये जानना चाहते थे भगवान कौन है, परम सत्य क्या है। My Gurudev used to tell all the time, when you first came to Krishna consciousness, you were very simple-hearted. मेरे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे जब आप पहली बार कृष्ण भावनामृत में आए तो आप बहुत सरल थे। You're just thinking, oh, this is very nice, I should serve God. So let me go to the temple to understand how to serve God. Right? शुरुआत में आप सोचते थे ये भगवान की सेवा करना बहुत अच्छा है, तो चले हम मंदिर जाते हैं जहाँ भगवान की सेवा कर सके जाके। And many of us, we had Prabhupada's books with the addresses in the back of the book. और बहुत सारे लोगों के पास यहाँ उनको प्रभुपाद की किताबें मिली और प्रभुपाद की किताब के अंत में मंदिर का जो पता लिखा था। Where is the nearest temple? जो नज़दीकी मंदिर कौन से हैं यहाँ पे। Then you go there with the book in your hand and you're ringing the doorbell or knocking on the door. Mostly it's like this, right? तो ज़्यादातर लोग जो है इस तरह अपने हाथ में भगवत श्रील प्रभुपाद जी की किताब लेकर आए मंदिर में, उन्होंने मंदिर की घंटी बजाई। वहाँ आने के बाद You meet some devotee, he gives you some book, you read it, so oh, this sounds very nice, very attractive. आप किसी भक्त से मिले, उन्होंने आपको कोई किताब दी, आपने उसको पढ़ा, फिर आपको लगा ये बहुत, उसने आपको बहुत आकर्षित किया। I found out about Bhagavad Gita because I very much like Gandhi. मुझे भगवद गीता मिली क्योंकि मुझे गांधी बहुत पसंद थे। I started reading about Gandhi, his autobiography and all of his writings and teachings. I really liked him. That was my first association with Indian person. ये मुझे गांधी बहुत पसंद थे। मैं उनकी शिक्षाएं, उनकी जो लिखी चीज़ें, उनकी जीवनी में काफ़ी पढ़ता था और वही एकमात्र भारतीय व्यक्ति हैं जिनके साथ मेरा संग था। So I bought all of his books, anything written about him. I was very serious about it. तो मैंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी लिखी हुई, मैं बहुत गंभीर था उनके बारे में पढ़ने के लिए। And then I was reading and then he kept mentioning Bhagavad Gita. और मैं पढ़ता रहा और कई बहुत सारे जगहों पे उन्होंने भगवद गीता के बारे में बातें की। So I was thinking, what is Bhagavad Gita? तो मैं सोचता था ये भगवद गीता क्या है।
So then I went to the bookstore anyway. Somehow I was searching, I got the Bhagavad Gita. तो मैं एक किताब की दुकान में गया और मैं भगवत गीता ढूंढ रहा था और मुझे एक भगवत गीता मिली। I went to this huge bookstore and there was just one little skinny copy of Bhagavad Gita. एक बहुत विशाल किताब की दुकान में गया और वहाँ बहुत पतली सी मुझे छोटी सी भगवत गीता मिली। And it was so small I couldn't even find it, you know. It was stuck between some big books, you know. I just somehow I pulled it out, you know. Somebody showed me, the person working there. मुझे वो किताब इतनी छोटी थी कि वो दिखाई भी नहीं दे रही थी उतने बड़े किताब की दुकान में, किसी दो बड़े बड़े किताबों के बीच में वो छुपी हुई थी। तो एक्चुअली मुझे किसी दूसरे व्यक्ति ने वो किताब निकाल कर दी वहाँ से। Uncle Bob, we're going to make you happy. अंकल बॉब, हम आपको खुश करके रहेंगे। We are determined. हम बहुत दृढ़। If you come every day, you'll become happy. I promise you. Guaranteed. अगर आप रोज यहाँ आएंगे आप खुश हो जाएंगे, ये गारंटी है। Prabhupada said, I made the hippies into happies. प्रभुपाद ने कहा मैंने हिप्पीज को हैप्पी बना दिया। So he wants us to be happy. तो हम आपको खुश देखना चाहते हैं। Prabhupada said, if you're practicing spiritual life, you know, nicely, you should be happy. प्रभुपाद कहते हैं अगर आप आध्यात्मिक जीवन अच्छे तरीके से अभ्यास कर रहे हैं तो आप खुश होंगे। You should be joyful. आप जो है आनंदित होंगे। Doesn't mean you're struggling and you're working, but you should be joyful. हो You सकता है should be happy. You're lucky to be there. आप हो सकता है थोड़ा संघर्ष करेंगे लेकिन आप आनंद में रहेंगे कि हाँ आप वहाँ पर उस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पे। Right? Not morose, depressed. बस दुख में या ऐसे हताश निराश नहीं रहेंगे। Another name for Krishna is Rama, a reservoir of all pleasure. कृष्ण का दूसरा नाम है राम, यानी कि सारे आनंद के स्रोत। So if we're serving nicely the reservoir of all pleasure, how we can be morose and depressed? तो अगर हम राम जो पूरे सारे आनंद के स्रोत हैं उनकी सेवा कर रहे हैं तो कैसे हम जो है हताश निराश रह सकते हैं? The reservoir of all pleasure can't make you a little happy? आनंद के पूरे जो भंडार हैं क्या वो आपको छोटा सा सुख नहीं दे सकते? Are we such cases like this? क्या हमारी ये हालत है? But really, Mahaprabhu, Lord Nityananda, their devotees, they say, oh, these people are unhappy, so let's try to make them happy. तो महाप्रभु के भक्त देखते हैं ये लोग खुश नहीं है तो चलिए इनको खुश करने का प्रयास करते हैं। By giving them Krishna. उनको कृष्ण देकर। And Krishna himself here in this verse is trying to give himself and says, I'll give you, if you come, you're sincere and serious, I'll give you intelligence how to come to me, how to understand me. और कृष्ण स्वयं इस श्लोक में बता रहे हैं मैं स्वयं को आपको दे दूंगा अगर आप गंभीर हैं ईमानदार हैं मेरे पास आने के लिए मैं आपको बुद्धि दूंगा आप कैसे मेरे पुस्तक आ सकते हैं। So first we have to decide what is our goal, what are we trying to achieve? तो पहले हमें ये निर्धारित करना होगा हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। When we first came to Krishna consciousness, as I was saying, we were very simple and we just said, oh, I want to surrender to God, I want to serve God, I want to serve Krishna, right? तो जब हम शुरुआत में हम आए इस कृष्ण भावनामृत में तो हम बहुत सरल थे, हम भगवान की सेवा करना चाहते थे, भगवान की शरणागत करना चाहते थे, कृष्ण की सेवा करना चाहते थे। And then my Gurudev would say, well, what happened to your initial simplicity? तो हमारे गुरुदेव पूछा करते थे क्या हुआ तुम्हारे उस शुरुआत की सरलता का? Now you've become crooked. अब तो आप जटिल हो गए हैं। Right? You lost focus of the simple desire just to surrender and serve God. आपने अपना ध्यान खो दिया, आपको वो सरल इच्छा थी भगवान को शरणागत करने की, उनको सेवा करने की। And this is because of asatsanga. और ये हुआ है असत्संग की वजह से। Somehow we became contaminated, poisoned by asatsanga. किसी तरह हम जो है दूषित हो गए, हम जहर डाल दिया गया असत्संग का हमारे। We're hearing wrong thing from wrong people, therefore our simplicity completely disappeared. हमने गलत चीज़ गलत लोगों से सुन ली, इसलिए हमारी सरलता हमने खो दी। So therefore our goals also became confused. इसलिए हमारा लक्ष्य भी भटक गया। And because of confused goals, then we have all the paths leading to all the possible goals, and our life is not steady, not peaceful, not clear. तो इसीलिए लक्ष्य के भटकने की वजह से हम जो है अलग-अलग जितने भी संभावित लक्ष्य हैं उनकी तरफ हम भटक गए और हमारे जीवन और ज़्यादा जटिल हो गया। So Prabhupada says, if you render sincere, serious devotional service, then Krishna, Lord of the heart, is witness and the judge. He'll mark it. तो कृष्णा जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, अगर आप गंभीर ईमानदार हैं तो कृष्णा उस बात को मार्क करेंगे। And Prabhupada explained that Krishna in the heart, he'll say, oh, this soul is really sincerely, seriously looking for me, trying to understand me, trying to come to me. और कृष्णा देखेंगे हमारे हृदय में जो न्याय करता है और गवाह है, वो देखेंगे कि ये गंभीरता से ईमानदारी से मुझे ढूंढ रहा है। So once the soul is really crying for Krishna, really wants Krishna, then Krishna, now
he will try to help us. तो एक बार जब कृष्णा देखेंगे ये मेरे लिए रो रहा है, मुझे ढूंढ रहा है, तो कृष्णा देखेंगे उस बात को. So somehow if we have this sincere desire, serious desire to surrender and to serve God, to serve Krishna, then Krishna says, I will give you the proper understanding and real intelligence, how you can understand it, how you can come to me. तो कृष्ण बताते हैं अगर आप गंभीर ईमानदार हैं मुझे शरणागत करने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए, अगर आपकी ये इच्छा है तो मैं आपको मदद करूंगा, मैं आपको समझने में मदद करूंगा, बुद्धि दूंगा. So Krishna is the source of all knowledge and intelligence. तो कृष्ण सारे ज्ञान और सारे बुद्धि के स्रोत हैं. So the closest person to our soul is Krishna, Super Soul, Paramatma, Chaitya Guru. तो सबसे नजदीकी व्यक्ति हमारी आत्मा के हैं वो परमात्मा कृष्ण, who is the ever well-wishing friend of every living entity. जो एकमात्र शुभचिंतक है सभी जीवात्माओं के. And the seed-giving father of every soul. और वो सभी जीवात्माओं के बीज प्रदाता पिता हैं. Who's the source of all knowledge and intelligence. जो सारे ज्ञान और सारे बुद्धि के स्रोत हैं. Who knows past, present, and future. जो भूत, वर्तमान और भविष्य को भी जानते हैं. And we're completely bewildered as to what to do. और हम पूरी तरह भटके रहते हैं कि हमें पता ही नहीं क्या करना है. You're sitting, no one's closer to your soul than the source of all knowledge and intelligence and remembrance, and we have no idea what to do. हमारे आत्मा के सबसे नजदीक वो हैं जिनके पास सारा ज्ञान, सारा बुद्धि के जो स्रोत हैं, और हम पूरी तरह भटके हुए, हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है. Because we're just speculating. We're just on our own, our intelligence, mind, senses, feelings, emotions. We're just trying to figure it out. और हम क्योंकि पूरी तरह भटके हुए अपने मनोधर्म की वजह से, हमारा भावनाएं, हमारा इच्छाएं, हमारा तो इस तरह से हम भटके हुए पूरी तरह से. It's like, you know, you have the smartest student sitting right next to you. You don't know how to solve the equation, right? You can just ask him. He'll show you how to do it. That's the easy way, isn't it? अगर कोई बहुत बुद्धिमान छात्र आपके सामने बैठा है, आपको कोई समस्या हल करनी है, तो आप जाके उसको सीधे-सीधे पूछ सकते हैं. So here's Krishna. He knows everything. He wants to help us. He's ready to help us. He's ready to explain everything to us. And we have little to no faith, and neither we're asking him. और यहाँ कृष्ण जो हमारी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हम ना तो उसमें श्रद्धा रख रहे हैं, ना हम उसे मदद लेने का प्रयास कर रहे हैं. I say, devotees, why are you so disturbed? Why are you so unhappy? Why are you so bewildered? They're like, I'm just trying to figure out what am I supposed to do. मैं कई बार भक्तों से पूछता हूँ, आप इतने दुखी क्यों हैं, आप इतने भटके हुए क्यों हैं, और तो फिर वो कहते हैं मुझे पता नहीं, मैं पता लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है. Not knowing what to do has me in complete anxiety. I cannot even sleep at night. मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, इसका मतलब पूरी तरह से चिंता में हूँ, पूरी तरह रात जो है सो नहीं पाता. Because I cannot switch off my brain. क्योंकि मैं अपने दिमाग का स्विच ऑफ नहीं कर पाता. It's so disturbing. इतना And परेशान it's करता है. putting me in so much anxiety. ये मुझे इतनी चिंताओं में डालता है. Not knowing. मैं जानता नहीं. And then I'm thinking maybe this and then maybe that, and I'm just going through hundreds, thousands of scenarios. और कभी सोचता हूँ कभी ये कभी वो, इस तरह हजारों लाखों दृश्य आते रहते हैं. And just when I finally think I have it figured out, और जब मुझे अंत में पता चलता है कि मैं कुछ पता नहीं लगा something पाया, comes or happens and it just completely destroys that plan. कुछ कहीं से आता है और उस योजना को पूरी तरह नष्ट कर देता है. So then we have to go back to plan making. तो हमें फिर से अब योजना बनाना शुरू करना पड़ता है. So this is all we're doing. तो ये हमेशा हम कर रहे हैं. Right? We're just contemplating and meditating on a plan. हम बस अपना हमेशा ध्यान लगाए हुए हैं और उसी हमारी योजना में ध्यान लगाते रहते हैं. What's your plan? What's your ultimate plan? आपका क्या अंतिम योजना है? Right? He's like always masterminding some plan, right? What's the plan? You ये know? हमेशा किसी योजना का मास्टरमाइंड करते रहते हैं. असल में योजना क्या है? Right? Whose plan is it? किसका योजना है? Is it Krishna's plan or is it your plan? ये कृष्ण की योजना है Is या it आपकी Maya's योजना plan? है या माया की योजना है? It's either Krishna or Maya. या तो कृष्ण है या माया है. So whose plan is it? So Shouldn't we know that first of all? Is that plan coming from Krishna or is that plan coming from Maya? तो ये किसकी योजना है? हमें ये पता नहीं लगाना चाहिए कृष्ण से आई है या माया से? Isn't that the only question? क्या यही एक Intelligent men, why will you endeavor and work hard on a plan and you have no idea whether that came from Krishna or came from Maya? बुद्धिमान व्यक्ति क्यों सारा अपना जोर लगाएगा उस योजना में जो उसको पता भी नहीं है कृष्ण से आया है या माया से? You're going to put all your mental energy and your resources and your finances and your time and everything into that plan and you don't even know whether that plan came from Krishna or Maya?
अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, क्या आप वो सारा समय, ऊर्जा और शक्ति उस चीज में लगाएंगे जो आपको पता भी नहीं ये योजना माया से आई है या कृष्णा से? And if it's coming from Maya, it's designed to fail. और अगर ये माया से आ रही है तो ये तैयार है फिर असफल होने के लिए। It's not, it may fail. ऐसा नहीं कि ये असफल हो If सकता it's है। coming from Maya, it's designed to fail. अगर ये माया से आ रही है तो ये असफल अवश्य होगी। Right? So if you're a businessman, you want to make some investment and the person says, oh, you want to buy the stock, but I'll just tell you next week it's going to crash and fail. But if you want to buy it, you can buy it now, तो अगर आप एक व्यापारी हैं, अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं किसी स्टॉक मार्केट में, अगर आपको पता है या ये एक स्टॉक है जहां आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ समय बाद ये असफल हो जाएगा ये स्टॉक, तो क्या आप वहां जाके अपना निवेश करेंगे? So you're going to go all in on that one? तो क्या all in? क्या आप सब कुछ उसमें लगाएंगे अपना सारा? When you know it's going to fail? जब आपको पता है ये असफल होने वाला है। Is that very intelligent? क्या ये कोई बुद्धिमानी है? Is that buddhi-yoga? क्या ये बुद्धि योगा है? So when I see people, they're like all fired up and they're doing something, and I say, oh, what are you doing? And they're like, and I ask them, I said, oh, you have a nice plan. Oh yeah, definitely I have a nice plan. कभी-कभी मैं देखता हूँ कुछ लोग पूरे जोर शोर से किसी योजना में लगे होते हैं, तो मैं जाकर उनको पूछता हूँ, ओह तुम्हारा तो योजना बहुत अच्छा है। Some are bewildered. They're like, I don't even have a plan. I don't even know where to begin with the plan, कुछ लोग तो पूरी तरह से भ्रमित रहते हैं, भटके रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता योजना क्या है, उनको बोलते हैं मेरे पास कोई योजना ही Because नहीं। you don't even know what you want, so how do you come up with a plan, right? आपको पता ही नहीं आपको चाहिए क्या, तो आप योजना क्या बनाएंगे? But some people, they know what they want and they have a plan. और कुछ लोग जानते हैं उनको क्या चाहिए, And they are तो वो कुछ fired योजना up. बनाते हैं और पूरे तरह जोर शोर से लगे रहते हैं। And then I just say, oh, is that plan came from Krishna और फिर मैं उनसे पूछता हूँ क्या ये योजना कृष्णा से आई है or Maya? या माया से? And then they get like shaky. और फिर वो थोड़े हिलने लगते हैं। They say, what? I never really thought about that. सोचते हैं, मैंने तो सोचा ही नहीं इसके I बारे said, well, isn't that an important thing to think about? में। तो ये कोई महत्वपूर्ण बात है या नहीं इसके बारे में सोचना? Because if the plan came from Maya, it's already designed to fail and be the cause of your suffering. So why will you go for that plan? तो अगर ये योजना माया से आई है तो ये अवश्य असफल होगी और आपके दुख का कारण बनेगी भविष्य में, तो आप क्यों उस योजना को करना चाहते हैं? So then you'll lose all of your confidence. तो फिर अपना आत्मविश्वास खो देंगे, Because you realize the plan is destined to fail. क्योंकि आप पता चल चुका है It's आपको ये योजना designed to अवश्य fail. असफल होगी, ये असफल होने के लिए बनी है। That's why Prabhupada says, most people, they don't understand this thing. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ज्यादातर लोग इस बात को समझते नहीं। No, I have a great plan. Inspiration came to me, and I'm seeing, I have a vision, and people are encouraging me, and these are all the excuses they make to build up some confidence in the plan, right? तो लोग बहुत सारे बहाने बनाते हैं, मेरे पास बहुत बड़ी योजना है, मैं इसके बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे प्रेरणा मिल रही है, लोग मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं आसपास के लोग, और मेरी बहुत बड़ी दृष्टि है इस योजना को लेके, तो वो बहुत अपने आत्मविश्वास महसूस करते हैं अपने इस तरह So से। you have a bunch of bewildered people who are bewildered with their mind and senses, speculating themselves, and they're encouraging you. That's the basis of your confidence? तो आपके पास ऐसे झुंड हैं ऐसे लोगों के जिनका खुद का ही मन और इंद्रिय पूरी तरह भटका हुआ है, और अब वो लोग आपको जब प्रोत्साहन कर रहे हैं तो आप उनके प्रोत्साहन पे आपको भरोसा है? They're guessing, they're speculating. वो बस They अंदाजा don't लगा रहे know. हैं, वो मनगढ़ंत तरीके से काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। And because they told you, you're taking that as absolute confirmation? और क्योंकि उन्होंने आपको कहा तो आप उसको परम सत्य मान के चल रहे हैं। So who's the source of our intelligence? Who's guiding our intelligence? हमारी बुद्धि के स्रोत कौन है? हमारी बुद्धि को दिशा कौन दे रहा है? Is it Krishna or is it Maya? ये कृष्ण है या माया? That's like the $1 million question here today, isn't it? ये करोड़ों रुपए का सवाल है आज का। Whose plan is it? Whose plan? Everyone has a plan. सबके पास कोई योजना है। One famous boxer, he was like a fighter, एक बहुत प्रसिद्ध बॉक्सर है, वो एक लड़ाकू थे। His name was Mike Tyson. उनका नाम है माइक टायसन। He was a really tough guy, बहुत तगड़े व्यक्ति हैं। He knocked a lot of people out cold. बहुत सारे लोगों को मार के बाहर कर दिया उन्होंने। And he said and he's not the
doesn't sound like the smartest guy, but sometimes some words of wisdom come out of his mouth. It's really bizarre, you know. सुनने में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं लगते, लेकिन कभी-कभी उनके मुख से भी कुछ ऐसी चीजें बाहर आ जाती है, लगता तो समझ में नहीं आता इनके मुख से ऐसी चीजें कैसे बाहर आई. And he said, everybody has a plan. वो कहते हैं सबकी कुछ न कुछ योजना होती है. Until you get punched in the face. जब तक आपको मुंह पे मुक्का नहीं पड़ता है. Makes a lot of sense, doesn't it? I got a plan. मेरे पास एक योजना है. And then Maya comes and just, you know, comes with heavy lashes, you know, just slams you. माया पूरा कड़ा प्रहार करती है आपके ऊपर. And then you're like, what happened? तो क्या हो गया? I thought it was gonna work. मुझे लगा ये काम करेगा. The plan was perfect. प्लान पूरा परफेक्ट था. It should have worked. काम करना चाहिए. Now we're just lamenting like anything. फिर हम पूरी तरह शोक करते हैं. So material life, as Prabhupada says, is a process of hankering. I want it, 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 and lamenting. I couldn't get it. I had it, I lost it. So hankering, lamenting. तो भौतिक जीवन जो हमेशा ऐसे उत्कंठा और ऐसे शोक में लगा रहता है. उत्कंठा में मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और जब शोक करते हैं तो मुझे मैंने ये खो दिया, मैंने ये खो दिया, मैंने ये खो दिया. So those who are hankering for material enjoyment and all this jnana and this karma, right? It says like two pots of poison. तो ये जो लोग हैं जो जिनकी उत्कंठा है कर्म और ज्ञान का भोग करने के लिए, लेकिन इसको जो है दो जहर के घड़े के रूप में माना जाता है. So it said those who have these desires separate from pure bhakti, they can never be peaceful. तो जिनकी भी इच्छा है शुद्ध भक्ति के अलावा वो कभी शांत नहीं हो सकते. No peace. कोई शांति नहीं. Maya, Krishna says, the sitting place of Maya is your intelligence, your material intelligence, your mind and your senses. That's where Maya has captured you. कृष्ण बताते हैं मन के माया के बैठने का स्थान है आपकी मन, आपकी बुद्धि और आपके इंद्रिय. यहाँ पर माया जो है आपको जकड़े हुए है. And we're listening to that. और हम उसको सुनते रहते हैं. And we're thinking, no, that is me. और हम सोचते हैं नहीं ये मैं हूँ. So if we're not listening to Krishna, अगर हम कृष्ण को नहीं सुन रहे हैं, and we're not hearing Krishna, और हम कृष्ण से नहीं सुन रहे हैं, then automatically we're listening and hearing Maya. तो अपने आप ही हम माया को सुन रहे हैं. So one will purify you, enlighten and liberate your soul. एक आपकी आत्मा को मुक्त करेगा और आपको ऊपर उठाएगा. The other will contaminate and confuse and degrade your soul. और दूसरा आपकी आत्मा को दूषित करेगा, नीचे गिराएगा और गंदा करेगा. So Maya, what is it? Complicates? Contaminates and complicates. तो माया सब कुछ जटिल बनाती है और सब कुछ When we दूषित. listen to Maya, she contaminates and complicates. माया को सुनेंगे तो वो सब कुछ दूषित करेगी, सब कुछ जटिल If we बनाएगी. learn to listen to Krishna, then we purify and simplify. अगर आप सीखेंगे कैसे कृष्ण को सुन सकते हैं तो आप शुद्ध होंगे, आप सरल बनेंगे. Based on our association. अपने संग के आधार पर. If we do asat sangha, means contaminate, complicate. अगर आप असत संग करेंगे इसका मतलब दूषित होंगे और जटिल बनेंगे. If we do satsanga, अगर आप सत्संग करेंगे, hear about Krishna, कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे, then means purify and simplify. इसका मतलब शुद्ध करेंगे और सरल बनेंगे. So our association determines our desire. तो हमारा संग हमारा इच्छा आधार निर्धारित करेगा. If we associate with materialistic people, we'll develop materialistic desire. अगर आप भौतिक लोगों के साथ संग करेंगे तो आपके भी भौतिक इच्छाएं प्राप्त होंगी. If we associate with sadhu, guru, Vaishnavas, we'll develop spiritual desire. अगर आप साधु गुरु वैष्णव के साथ संग करेंगे तो आपको आध्यात्मिक इच्छा प्राप्त होगी. So who we associate with exactly determines our desire, whether spiritual or material. तो जिनके साथ हम संग करेंगे वो निर्धारित करेगा हमारी इच्छा या भौतिक या आध्यात्मिक. And if we go on associating with those persons, either materially or spiritually, that will increase the intensity of that desire, either materially or spiritually. तो उन भौतिक या आध्यात्मिक लोगों के साथ संग करने से जितना ज़्यादा हम उनके साथ संग करेंगे तो हमारी इच्छा शक्ति उतना ही तीव्र होगी, भौतिक या आध्यात्मिक
रूप से। Srila Prabhupada said the only thing a soul can do is desire. श्रील प्रभुपाद बताते हैं आत्मा सिर्फ एकमात्र काम कर सकती है इच्छा करना। And our associations determine our desire, whether material or spiritual. और हमारा संग निर्धारित करता है हमारी इच्छा क्या होगी, आध्यात्मिक या So भौतिक। the more we associate with Krishna, Krishna's devotees, Vaishnava, Sadhguru Vaishnava, then this will purify the materialistic desire and increase the spiritual desire. तो हम जितना ज़्यादा संग करेंगे कृष्णा से, कृष्ण के भक्त से, साधु गुरु वैष्णव से, तो ये भौतिक इच्छा को कम करता जाएगा और हमारे आध्यात्मिक इच्छा को ऊपर उठाता जाएगा। Is most important association. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। Because that directly influences our desires and our goals. क्योंकि ये सीधे सीधे प्रभाव डालता है हमारी इच्छाओं पे, हमारे लक्ष्य पे। And the intensity of our desire and our goals. और हमारी इच्छा शक्ति हमारे और हमारे लक्ष्य। And then Krishna's Paramatma Chitta-guru, he just fulfills our desires, whether materially or spiritually. और कृष्ण परमात्मा चैत्य गुरु हमारी इच्छा को पूरा करते हैं, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक। So only thing soul can do is desire. एकमात्र काम आत्मा कर सकती है इच्छा करना। So what is our desire? What is our goal? तो हमारी क्या इच्छा है, हमारा क्या लक्ष्य है, And then what is the plan how to reach that goal? और हमारी क्या योजना है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की। Then where did that plan come from? और वो योजना कहाँ से आई है? Is it coming from Krishna or coming from Maya? ये कृष्णा से आ रही है या माया से? So here, तो यहाँ Krishna is assuming that you're sincere and serious and want to render loving devotional service to me. If it's like that, then I'll give you spiritual intelligence and guidance and remembrance how to do it. तो कृष्ण बता रहे हैं अगर आप गंभीर हैं, ईमानदार हैं, आप मुझ पर मेरी भक्ति करने के लिए, मुझ तक आने के लिए, तो मैं आपको बुद्धि दूंगा उसको प्राप्त करने के लिए। Because he says, I'm in everyone's heart, I'm the source of knowledge, intelligence, and remembrance. क्योंकि वो कहते हैं मैं सभी के हृदय में हूँ, मैं स्रोत हूँ सारे ज्ञान और बुद्धि का। If your desire is you want to remember me, I'll give you intelligence how to remember me, how to come to me. अगर आपकी इच्छा है मुझे हमेशा स्मरण करने की, तो मैं आपको बुद्धि दूंगा कैसे आप मुझे हमेशा स्मरण कर सकते हैं और मेरे पास आ सकते हैं। And Krishna says, and if you want to forget me, then I'll make you forget me. और कृष्ण कहते हैं अगर आप मुझे भूलना चाहते हैं तो मैं आपको मुझे भुला दूंगा। So everything is based on desire. तो सब कुछ आपकी इच्छा पे आधारित है। So first we have to determine तो सबसे पहले what association is best for us and which will directly influence our goals and our desires in a spiritual way. तो हमें सबसे पहले ये निर्धारित करना होगा हमारे जो इच्छा और हमारे लक्ष्य को कौन निर्धारित कर सकता है, हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य को। And that is real buddhi-yoga, that's real spiritual intelligence. और ये असल बुद्धि योगा है, ये असल आध्यात्मिक बुद्धि है। So is the intelligence we're getting, the plan we're getting, is it coming from Krishna's intelligence and instruction? तो जो हमें बुद्धि आ रही है, जो हमारे पास योजना आ रही है, ये कृष्ण की बुद्धि है, कृष्ण के निर्देश हैं ये? Or is it coming from a material platform by the influence of Maya through contaminated mind and senses? That is the question. और ये माया से आ रही है, भौतिक मन, भौतिक बुद्धि से। Does anyone have any questions or points on any of this? किसी कोई सवाल है इनमें से किसी भी विषय के ऊपर? Yes, Mataji? जी माता जी। Look, I'm not your judge. देखिए मैं आपका न्यायकर्ता नहीं हूँ। I'm not the judge of your sincerity or your seriousness. मैं आपकी गंभीरता और आपकी ईमानदारी का न्याय नहीं करने वाला। Krishna is. कृष्णा करेंगे। So Krishna is in everyone's heart. He is the witness and the judge. कृष्णा सभी के हृदय में है, वो गवाह है, वो न्याय करेंगे। So whatever we're desiring, materially or spiritual, He's fulfilling those desires. तो जो भी हमारी इच्छा है भौतिक या आध्यात्मिक, वो उसको पूरा करते हैं। Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. So, like you said that most of the people are like they are hankering for artha and kama. Yeah, Prabhupada said that. Yeah. प्रभुपाद ने ऐसा So कहा। same as like in the Gautami Swami Maharaj, his book The Flow of Nectar. In that particular book, he also wrote the same thing like the jivas. They are like the Maya attacking like bhukta and mukta, like they are Like demons or witches. Yeah. 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 So they are like they want either bhoga dharma or tyaga dharma. When they are frustrated by those material things, they are hankering for moksha. But the real dharma is Bhagavad dharma. Like whatever the Krishna told, his pure devotee, like Krishna told Yeah. Arjuna. So like That's transcendental, pure. yeah, the transcendental.
the Jiva Swarup hoy Nitya Krishna Das. So my Swarup is serve the Krishna so that I'll be happy. Right. The more I want to happy by materialistic thing, the more I get miseries. Hankering, lamenting. I want to get rid of this attachment, but it's not up to me. It is up to you, because you have to decide, do you want to do asatsanga or satsanga? That's your choice. तो माता जी का सवाल है कि जैसा आपने बताया अपने क्लास में कि ज़्यादातर लोग जो है कलयुग में वो या तो अर्थ या काम के पीछे, इंद्रिय तृप्ति के पीछे जाते हैं। और श्री गौरव से महाराज ने भी अपने किताब में बताया है फ्लो ऑफ नेक्टर में कि लोग त्याग धर्म और भोग धर्म इस पे दो पे काम करते हैं, लेकिन जो सबसे सर्वोत्तम धर्म है वो भागवत धर्म और जीव का स्वरूप नित्य कृष्णदास है, यानी कि भगवान की सेवा करना, भगवान की को शरणागत करना। तो मैं अपने अंदर देख पाती हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक आसक्ति हैं, तो मैं इनसे मुक्त हो सकती हूँ, लेकिन ये मेरे ऊपर नहीं है कि मैं इनसे मुक्त हो पाऊँ। तो गुरुदेव बताते हैं, वो उत्तर देते हैं कि ये आपके ऊपर है, आपको तय करना है आप कौन सा संग करना चाहते हैं। She said, I have no choice. Yes, we have a choice. Who do we want to associate with? हमारे पास चुनाव है करने के लिए, हम किसके साथ संग करना चाहते हैं। Krishna says we have minute independence. कृष्ण बताते हैं हमारी बहुत अल्प स्वतंत्रता है हमारे पास। But why it's independence, why it's minute, is because we can only make one decision. क्योंकि ये क्यों अल्प स्वतंत्रता कही जाती है, क्योंकि हमारे पास बस एक ही चुनाव हम कर सकते हैं। Is do you want Krishna or you want Maya? कि आप कृष्णा चाहते हैं या माया चाहते हैं। Once you decide you want Krishna, then Krishna takes charge of you. एक बार आप निर्णय कर लेते हैं आप कृष्ण चाहते हैं तो कृष्ण वहाँ से चार्ज ले लेते हैं। If you don't choose Krishna, then Maya takes charge of you. अगर आप कृष्ण का चुनाव नहीं करेंगे तो माया वहाँ से चार्ज ले लेगी। And just wraps a chain around your neck and just drags you. और आपके गले में चेन लपेट के आपको खींच के लेकर। And all your thoughts and your feelings and your plans and desires will all be Maya. तो आपके विचार, आपकी इच्छाएं, आपकी अनुभूति ये सब कुछ माया के द्वारा प्रभावित की जाएगी। So Prabhupada says that means we're misusing our minute independence. प्रभुपाद कहते हैं इसका मतलब हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी छोटी अल्प स्वतंत्रता का। So if we're intelligent and wise and fortunate, we'll cooperate with Krishna. तो अगर हम बुद्धिमान, चतुर और भाग्यवान हैं तो हम कृष्ण के साथ सहयोग करेंगे। We'll try to understand what is Krishna's plan for me. हम ये समझने का प्रयास करेंगे कृष्ण की क्या योजना है मेरे लिए। Krishna has a plan for every living entity. कृष्ण के पास सभी जीवात्मा के लिए एक योजना When है। people are like, oh, I don't know what to do. I'm just so confused. It's so confusing. I need a plan. I said, well, did you ask Krishna? कई बार लोग कहते हैं मैं बहुत भटका हुआ हूँ, मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है, मैं बहुत भ्रमित हूँ। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपने कृष्ण से पूछा कृष्ण की क्या योजना है उनके लिए? In most cases, they're almost like surprised by that question. ज़्यादातर समय तो लोग चौंक जाते हैं मेरे सवाल से। They're like, oh, no, I didn't ask Krishna. वो सोचते हैं, ओ मैंने कृष्ण से तो पूछा ही नहीं। So we have to be reminded. तो हमें याद दिलाने की, स्मरण दिलाने की। That's why associating with Krishna's devotees, the devotees will remind, Krishna will use devotee to remind that you're not asking Krishna. इसलिए भक्तों के संग में कृष्ण हमें याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि आप कृष्ण को नहीं पूछ रहे हैं। You're acting as own guru. आप खुद के गुरु के रूप में काम कर रहे हैं। You're deciding for yourself. You're making your own plan. आप खुद के लिए निर्णय बना रहे हैं, खुद की योजना बना रहे हैं। But all of that plan is Maya. लेकिन ये सारी योजना माया है। And Maya means, Prabhupada says, failure from the beginning, the middle, and the whole thing is faulty. और प्रभुपाद बताते हैं माया शुरू में, मध्य में, अंत में सब हमेशा असफल रहेगा, पूरा सब कुछ ही गलत है यहाँ। And that thing that Prabhupada says, that thing you think you're enjoying now will be the very source of your suffering later. प्रभुपाद बताते हैं जिस चीज़ का अभी आप सोच रहे हैं कि जिससे आपको आनंद मिल रहा है, वही चीज़ आपके भविष्य के सारे दुखों का कारण बनने वाला है। There'll be a price for that. आपको उसको कीमत A चुकानी very पड़ेगी। severe price. बहुत महंगी कीमत So चुकानी mode पड़ेगी। of passion, rajagun, oh yes, I'm enjoying, everything is very nice. रजोगुण में सोचते हैं बहुत सब कुछ आनंद में है, But sometime the bill will come in. और कभी-कभी बाद में बिल आता है। You're just using credit cards, right? And one day all the bill comes in. अब बस क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और अंत में एक दिन बिल उठता है। Now you have to pay up, isn't it? अब आपको चुकाना है उस सारे कीमत को। We cannot cheat the system.
हम व्यवस्था को ठग नहीं सकते। We cannot cheat Krishna's system. आप कृष्णा की व्यवस्था को ठग नहीं सकते। So it's either Krishna's plan or Maya's या plan. तो कृष्णा का योजना होगा या माया का। Now it's up to us to decide which plan do you want to hear? Which plan do you want to receive? Krishna's plan or Maya's plan? तो अब हमारे ऊपर है हम कौन सी योजना को सुनना चाहते हैं, कौन सी योजना प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्णा या माया की। And once we make that decision, either Krishna will take complete charge of you or Maya will take complete charge of you. और एक बार आपने जब ये फैसला ले लिया तो या तो कृष्णा पूरा चार्ज देंगे या माया पूरा चार्ज देगी आपका। So if we want to protect our spiritual desire and increase our spiritual desire, then we should be eager and pray to always be in nice association of simple-hearted, sincere devotees of Krishna. तो अगर हम अपने आध्यात्मिक इच्छा की रक्षा करना चाहते हैं और इसकी इच्छा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें हमेशा लोभी होना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान के एकनिष्ठ ईमानदार भक्तों का हमेशा मुझे संग प्राप्त हो सके। Who were dedicated to hearing and chanting about Krishna. जो पूरी तरह समर्पित हैं कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करने के लिए। For those who want to really be devotee and reach the goal and develop the spiritual life, that's the first priority. जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करना चाहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ये सबसे पहला उत्तरदायित्व है करना। Because without nice shravanam, without nice hearing Hari-katha Krishna-katha, there's no purification of the consciousness. क्योंकि बिना हरि कथा हरि नाम श्रवण के शुद्धि चेतना की शुद्धिकरण नहीं हो सकती। And then we'll just be acting on materialistic desire and materialistic motivation. और हम पूरी तरह से भौतिक इच्छा, भौतिक उद्देश्य के आधार पर कार्य करेंगे। So even we make priorities and then somewhere 7, 8, 9, okay, be devotee, go to the temple, chant Hare Krishna, right? It's like very low on the priority list. तो अगर हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में 7वें, 8वें, 9वें नंबर पे है मंदिर जाना और आध्यात्मिक जीवन अभ्यास करना तो ये बहुत ही कम है अभी इच्छा। But it's supposed to be in the first place, and the number one priority. ये नंबर 1 स्थान होना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए इसकी। So are we making that our number one priority? तो क्या हम इसको अपना सबसे पहली प्राथमिकता बना रहे हैं? And if not, that means we're choosing asatsanga. और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम असत्संग का चुनाव कर रहे हैं। Means we'll stay in a materialistic association and just hang on to and cultivate the material attachment and material desire. इसका मतलब हम जो है भौतिक संग करेंगे और भौतिक इच्छा को बढ़ाते रहेंगे और उसी में लटके रहेंगे। And we'll just be hankering and lamenting on materialistic platform. और हम बस उत्कंठा करते रहेंगे, शोक करते रहेंगे भौतिक स्थिति में। And all of those activities, thinking, feeling, willing, everything is under control of Maya. और वो सब सोचना, विचार करना, और उसको महसूस करना, और उस पे कार्य करना, ये पूरी तरह माया के नियंत्रण में है। And it's designed to fail. और ये निर्माण किया गया है असफल होने के लिए। Sooner or later. अभी या बाद में। So you want to build your house, your mansion on the bank of the river? Go for it. तो आप नदी के किनारे अपना घर बनाना चाहते हैं, महल बनाना चाहते हैं तो बनाइए। So, are you okay with that? तो आप ठीक हैं? Because you're acting like victim, like, oh, I have nothing to say, I cannot do anything. No, you're not a victim. You have a choice. आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे आपको प्रताड़ित किया गया है। नहीं, आपके पास चुनाव है, आप नहीं तो वरना आप कुछ कह नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन आपके पास चुनाव है करने के लिए। And if you make the priority, let me associate with simple-hearted devotees who are hearing and chanting about Krishna, then we have best chance to purify our consciousness and maintain and develop our spiritual desire. तो अगर आप चुनाव करते हैं सरल और एकनिष्ठ ईमानदार भक्तों के साथ संग करने का और उसको अपने जीवन की प्राथमिकता बनाते हैं तो आपके पास सबसे श्रेष्ठ मौका है अपने आप की चेतना को शुद्ध करना और अपनी आध्यात्मिक इच्छा को बनाए रखना। That is where the medicine is. That's where you get the medicine. यहीं आपको वो औषधि मिल सकती है। That's where you get the prasad. वहीं आपको प्रसाद मिलेगा। So without the medicine and the prasadam, we just become mad fellows. तो बिना प्रसाद के और बिना दवा के हम पागल व्यक्ति की तरह हैं। Means uncontrolled mind and senses. यानी कि अनियंत्रित मन और इंद्रिय। That means suffering condition. इसका मतलब दुखमय परिस्थिति। So if you want to enjoy that suffering condition, who will stop you? अगर आप इस तरह के दुखमय परिस्थिति का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको कौन रोक सकता है? If you want to get out of that, अगर आप उससे बाहर आना चाहते हैं,
then this, desire to associate with devotees who can help us is number one priority. तो ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए उन भक्तों के साथ संग करने का हमारी. Okay? ठीक है? We're not a victim. We're only victim of Maya when we choose not to cooperate with Guru and Krishna. हम प्रताड़ित नहीं किए जा रहे, हमें तब प्रताड़ना दिया जाता है जब हम चुनाव करते हैं, हम माया के योजना को चुनना चाहते हैं. Can I ask one question? Yeah. क्या मैं एक और सवाल पूछ सकती हूँ? In Bhagavad Gita chapter 14, 10th verse, Krishna says. I'm not a scholar. I hope I can answer this question. मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है इनके सवाल का जवाब दे पाऊँ. Just quoting Shastra and all of this thing, शास्त्रा यहाँ बोल रही है यहाँ पे सामने. I'm getting nervous, and I'm not like a jnani, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ. Pray for me that I can answer this question. प्रार्थना करो मेरे लिए कि मैं इनके सवाल का उत्तर दे पाऊँ. Okay. Krishna says to Arjuna that sometimes goodness, like we are like, there is three modes of nature: goodness, passion, and ignorance. So sometimes Under modes of nature. Yeah. Yeah. So sometimes goodness is predominant, sometimes ignorance is predominant, and sometimes passion is predominant. To progress in bhakti, spiritual life, we have to be in goodness plan. Being in a passionate, being in ignorance, how we can elevate ourselves? So Associate with Vaishnavas. तो माता जी पूछ रही हैं भगवद गीता के 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं प्रकृति के 3 गुण हैं, उसमें से सतो, रजो और तमोगुण, जिसमें से कभी कभी सतोगुण ज़्यादा प्रभावी होता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण. तो बताया जाता है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए या आध्यात्मिक जीवन बनाए रखने के लिए कम से कम हमें सतोगुण में स्थित रहना होगा. तो कैसे हम उस सतोगुण में हमेशा स्थित रह सकते हैं? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि भक्तों के साथ संग कीजिए. Then you get out of the modes of material nature. तो आप ये प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ पाएंगे. Then you come to soul platform. The तो आप topic and the conversation and the meditation and the prayer and services on soul platform, not on the bodily platform. तो आप आत्मा के स्तर पे आके कार्य कर पाएंगे, आत्मा के स्तर पे वार्तालाप कर पाएंगे, गतिविधि कर पाएंगे. It's really interesting. People come and they have this plan, and I got to do this, and I got to do this, and I don't even hear the plan. All I see is they're like the mode of passion personified, coming and asking me a question. I don't even know what is their plan. I just see what is the consciousness of the plan, right? कभी-कभी कुछ लोग आकर मेरे पास कहते हैं, मेरे पास बहुत एक विशेष प्लान है, बहुत ही मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ, और मैं कभी-कभी मुझे पता भी नहीं होता इनका प्लान क्या है, लेकिन मैं देख पाता हूँ वो इतने रजोगुण में है. I got to do like this and like that, and I'm going to do like that and this, and I'm like, whoa, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, फिर मैं वैसा करूँगा, फिर मैं ऐसा करूँगा, मैं तो ये करूँगा, वो करूँगा, फिर मैं देखता हूँ उनकी चेतना कहाँ है. I'm like, this already was starting in wrong way, मैं देखता हूँ पहले इसकी शुरुआत ही गलत हो रही है. Because it's all, rajagun. पूरा रजोगुण है ये. That means it didn't come from Krishna. इसका मतलब ये कृष्णा से नहीं आया. If it's coming from Krishna, you should be peaceful and just steady and just move towards your plan, right? To Krishna's plan. तो अगर ये प्लान कृष्णा की योजना कृष्णा से आएगी तो आप बहुत स्थिर होंगे और निरंतर उस पथ में प्रगति करेंगे बहुत शांति से. You don't go to the guru and like pounding your chest like, yes, this is my inspiration, Krishna is telling me, आप ऐसा नहीं कि गुरु के पास जाके छाती पीट कर कहेंगे ये कृष्णा का प्लान है, ये मुझे प्रेरणा मिल रहा है, कृष्णा मुझे ये प्रेरणा दे रहे हैं अंदर से. Like if you say it emotionally and sentimentally enough that somehow that's going to convince the guru that it's like spiritual, अगर आप पूरे भावनाओं के साथ बह के गुरु के सामने ऐसा कहेंगे योजना कृष्णा से आ रही, तो गुरु ऐसे भावनाओं में नहीं बहेंगे. Even tears can come. You can do a whole drama, यहाँ तक कि आप आंखों से आंसू बहा सकते हैं, आप सारा नाटक कर सकते हैं. All night I couldn't sleep. Jagannath came to me, and I hear so many stories. You won't believe it, मैं पूरी रात सो नहीं पाया. जगन्नाथ मेरे सपने में आए. आप विश्वास नहीं करेंगे लोग क्या बातें मुझे आके कहते हैं. I have to do like this, मुझे ऐसा करना ही होगा. And I just say,
It's all sentimental, emotional, under modes of nature, you know, and so strong, like tsunami. So we're thinking, this definitely Krishna wants me to do like this, you know. तो ये योजना जो है असल में भौतिक गुणों के अधीन अंदर से आ रही होती है, और हम इसके पीछे सुनामी की तरह ये जो तीव्र गति से हमारे अंदर से आ रही होती है पूरे भावपूर्ण स्तर से। तो लेकिन ये जरूरी नहीं कृष्ण की योजना हो। But that's why we need a guru. इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। If it's really coming from Krishna, then bona fide guru will tell you the same thing. अगर ये असल में कृष्ण से आ रही है तो प्रमाणिक गुरु आपको वही चीज बताएंगे। The guru is not there to stop you from understanding what Krishna wants you to do. He's there to just confirm for you, this is what Krishna wants you to do. गुरु आपको ये रोकने के लिए नहीं है कि कृष्णा आपके लिए क्या चाहते हैं, कृष्णा की क्या योजना है आपके लिए। वो वहाँ पर इसी बात की पुष्टि करने के लिए कि कृष्णा की क्या योजना है आपके लिए। So you don't have to do a drama, you know. तो आपको ऐसा नाटक करने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. I just tell devotees, you pray to Krishna, and I'll pray to Krishna, and let's pray that Krishna will guide us to understand what he wants. That's it. मैं भक्तों से बस इतना कहता हूँ, आप कृष्णा से प्रार्थना कीजिए, मैं कृष्णा से प्रार्थना करूँगा। कृष्णा को अनुमति दीजिए कि वो हमें दिशा निर्देश दे, हमें बताए कि क्या योजना। The guru doesn't have some separate plan for you. गुरु के लिए हमारे पास कोई अलग से योजना नहीं होती है। He just wants to know, Krishna, what do you want this person to do? What's the best way that you can engage that person? वो बस ये बताना चाहते हैं कि कृष्ण की क्या योजना है आपके लिए, कृष्ण क्या चाहते हैं इस व्यक्ति के लिए जो इसके लिए श्रेष्ठ हो। Yeah. I want to say that when we are in association with the devotee, so the main point is that if the devotee judge and criticize the devotee that you stay together, then it's very difficult the association with them. He says and this don't mean that you don't want to stay with the devotee or the devotee or person that are not Krishna conscious. Sometimes the people that are not to follow Krishna consciousness are more simple and more sincere than the devotee that follow Krishna consciousness. Because the people have to be sincere, honest, humble for have a good relationship. Otherwise, as Krishna say, if you are afraid to be in bad situation, then the false ego grow more and more. More you are free to be in this way, in the other way, and the false ego grow, and the relationship don't come. So he said that sometimes when we're in the association of devotees, the devotees are criticizing, somebody's criticizing one another like this, so they don't have very good relationships. Yeah. And he says sometimes even the non-devotees, they actually have better qualities, they're more simple, more humble, you know, because they have to have polite relationships to get along. And then I missed the last part about that was all I got so far. Did you catch the last part? My hearing is not great, so that's why I'm just asking them to help me to understand. What was the last part? Last part about false egos? The last part is that when we are afraid for one person or some situation, and Krishna say when we are afraid, the false ego grow. Within false ego, there is not any kind of spiritual relationship. Because the main things that I understood from the Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada, are to be humble, to be simple, and to be faithful in devotee and Krishna and Guru. It's clear, Maharaj. You understood? So he's saying that if we're in false ego, then we'll be fearful. And you know, we should try to be simple, and then we can have a relationship with Krishna, something like this. You see, if they're really devotee, they'll be very nice, simple-hearted gentlemen, and have nice Vaishnava qualities, nice behavior, isn't it?
प्रभु का सवाल है कि कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन भक्तों के बीच में रहते हैं, लेकिन वो दूसरों को प्रति बुराइयाँ देखते हैं और आपस में अच्छे संबंध नहीं रह पाते। और कई बार हम देखते हैं बाहर के लोग जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं करते हैं, उनके अंदर भी कुछ सामान्य अच्छी गुण होते हैं, सरलता, विनम्रता, ये सब चीज़ें होती हैं। और श्री प्रभुपाद ने भागवतम के एक तात्पर्य में प्रभु ने पूछा कि अगर हम विनम्र हैं, हम और सरल हैं और श्रद्धावान हैं, तो हम अच्छे संबंध रख सकते हैं भक्तों के बीच में। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि अगर कोई असल में भक्त है या कोई असल में वैष्णव है, तो वो असल में सरल हृदय का होगा, सभ्य व्यक्ति होगा और अच्छे वैष्णव बर्ताव, रवैया दिखाएगा अपना। So, you know, just because someone joins a religious institution, puts on the dress, it doesn't mean they're a devotee, like real devotee. That's external consideration, right? तो अगर कोई बस किसी संस्था से, धार्मिक संस्था से जुड़ जाए और बस धार्मिक संस्था के कपड़े पहन ले, तो ऐसा मतलब नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त बन गया। ये बस एक बाह्य विचार है। So that's one of the problems. As soon as you get initiated or you get a guru or you join the institution, then you think I'm already devoted. तो यही समस्या है, जब आप संस्था से जुड़ते हैं, आप दीक्षा ले लेते हैं और आप सोचते हैं आपके पास गुरु है, आप ऑलरेडी आप भक्त बन गए। I remember one Mataji was saying that there was one Indian Mataji. She was very nice. She used to associate with her, and then once she got initiated and got a guru, then she's just singing all these songs to Srimati Radharani, and she thinks she's like a Premi Bhakta on the Raganuga platform, and she's so puffed up, you cannot even have any discussion with this person, you know. तो मुझे याद है एक बार एक भारतीय महिला थी जो शुरू में बहुत सरल थी और बाद में उन्होंने दीक्षा ले लिया, उन्होंने गुरु स्वीकार कर लिया और उसके बाद वो राधा रानी के प्रेमी भक्त वाले गीत गाने लगी और उसके बाद उनका अहंकार इतना बड़ा हो गया कि कोई उनके जाके थोड़ा कुछ बातचीत भी नहीं कर सकता उनसे। So when we join, we don't know anything. We're just simple. Just when I came to serve God, I came to serve Krishna. तो जब हम शुरुआत में जुड़ते हैं तो हम बहुत सरल होते हैं, हम कृष्ण की सेवा करने के लिए, उनको शरणागत करने के लिए आते हैं, सरल होते हैं। And somehow you get sucked into this institutional kind of, how do we call it, dilemma. किसी तरह से जो है हम इस संस्था के दुविधा में हम जाके फंस जाते हैं। So instead of being more simple, more pure, more nice devotee Vaishnava quality, we're becoming more arrogant and puffed up. Oh, I have the temple president, I have this authority, I'm in charge of this and that, you know. You're just cultivating all materialistic, demoniac qualities, not devotee qualities. तो और सरल होने के बजाय, शुद्ध होने के बजाय, भक्तों का गुण उत्पन्न करने के बजाय, विकसित करने के बजाय हम सारा गुस्सा, अहंकार, ये सारे गुण उत्पन्न करते हैं जो कि आसुरिक गुण हैं। मैं टेम्पल का प्रेसिडेंट हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, ये सब तो भौतिक और आसुरिक प्रवृत्ति है। And then they're thinking that depending on how long you're in the institution and what position you have in the institution, that shows whether you're advanced devotee or not. लोग ये सोचते हैं कि आप संस्था में कितने सालों से हैं और कितने ऊंचे पद पे हैं, ये निर्धारित करेगा आप कितने बड़े भक्त हैं। You try to say something to devotees, say, hey, when did you join ISKCON, you know? आप किसी भक्त को कुछ बोलने की कोशिश करें, वो कहेंगे तुमने ISKCON कब ज्वाइन किया? And you say, you know, you tell a date, and then the person says, oh, I joined 1 year before you, you know. Pay obeisance. आप उनको कहेंगे इस दिन मैंने ज्वाइन किया, फिर वो कहेंगे मैंने 1 साल तुमसे पहले ज्वाइन किया, अभी दंडवत करो यहाँ पे। This is crazy. ये पागलपन है। And then you join the same year, and then they're like, well, but what month did you join, you know? और कभी-कभी ऐसा होगा, पता चलेगा आपको दोनों ने एक ही साल में जुड़े हैं ISKCON से, तो कौन से महीने में जुड़े हैं आप? They're like, I came in May. Like, why, you know? I said, well, I came in February, you know? तो कहते हैं कि मैं तो मई में जुड़ा, क्यों? मैं फरवरी में आया हूँ। Like, there's that much advancement you can make between February and May? Is it like this? तो ये आपकी उन्नति तय करेगा कि आप फरवरी में जुड़े या मई में जुड़े हैं। This is all nonsense. ये बकवास है। Has nothing to do with spiritual life at all. इसका आध्यात्मिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है।
And then there's no guru, there's no senior devotee saying, hey, this is nonsense, what are you doing? और कोई गुरु नहीं है, कोई वरिष्ठ भक्त नहीं है यहाँ ये कहने के लिए, ये सब बकवास है। This is not spiritual. Yeah, There's nobody to correct them. There's nobody to say, you're not on that platform. कोई उनको सही करने के लिए नहीं है, ठीक करने, सुधारने के लिए नहीं है कि आप उस स्तर पे नहीं हैं। You're puffed up. तुम अहंकार में। Be simple, be humble, be servant of the Vaishnavas. सरल बनो, विनम्र बनो और वैष्णव के सेवक बनो, दास बनो। They asked Prabhupada, Prabhupada was in France and he was talking about the different four classes of devotees, and the person asked, well, what class are you, Prabhupada? एक बार फ्रांस में प्रभुपाद बता रहे थे चार श्रेणी, भक्तों के चार श्रेणी के बारे में बता रहे थे, तो एक भक्त ने सवाल पूछा, प्रभुपाद आप कौन सी श्रेणी में हैं इन भक्तों में? And Prabhupada said, I'm 5th class. प्रभुपाद ने कहा मैं 5वें श्रेणी में, because I'm the servant of all the other classes. क्योंकि मैं इन सारे अलग श्रेणियों का मैं सेवक हूँ, दास हूँ। That's Vaishnava. ये है वैष्णव। So we have to wish everybody well, but also make sure you select the right people to associate with. That's all. तो We wish everybody well in their progress, in their practice, but better you just find those devotees that you can really have relationship with, you know. तो सभी अपनी जगह पे अच्छे से उन्नति करें और आगे बढ़े, हमारी यही उनसे विश है, लेकिन हमें ऐसे कुछ सरल लोगों के साथ संग करना चाहिए जिनके साथ हम अपनी चीज़ों को बांट सकें, अपनी चीज़ों को बता सकें। Right, sometimes I go to the temple and it's like, you know, you're going to like debate people on philosophy, you know, like who's like, you know, who can lift as much weight, who can lift the more weights, you know, it's like some competition or something, you know. कभी-कभी कुछ लोग मंदिर में जाते हैं कि कौन उनसे जो बहस में जीत सकता है या कौन किसके साथ वो बहस कर सकते हैं, जैसे कि कोई वेट लिफ्टिंग के लिए जाता है, कौन कितना वजन उठा पाएगा। How many shlokas do you know, you know? उनको कितना श्लोक पता है? I know one person, right? He used to come to the class and he had a whole box, right, of index cards of shlokas, like a huge box, right? And he would come to the class with this box of shlokas that he knows, you know, and the whole time he's just like looking through. He didn't listen to anything, you know. मुझे याद है एक भक्त था, उसके पास एक बहुत बड़ा सा बॉक्स था जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे श्लोका के सूची पत्र रखे थे, जिसकी कौन से श्लोक उनको याद हैं, और पूरे क्लास के दौरान वो बस अपने जो श्लोका के सूची पत्र बॉक्स में हैं उन सबको ढूंढता रहता था, पूरा क्लास बिल्कुल सुनता नहीं था वो। He's just massaging his false ego the whole class, you know. वो पूरे अपने समय अपने मिथ्या अहंकार का मसाज करता रहता था। It's making it stronger, you know. इसको और मजबूत बनाता रहता था वो। So we need a senior devotee Vaishnava guru who will just tell us like what is the truth of the matter, you know. हमें कोई ऐसा वैष्णव वरिष्ठ भक्त ऐसा गुरु चाहिए जो हमें बता सके कि असल में वस्तु की सच्चाई क्या है। And with love and affection and sincerely trying to help you, but at the same time giving, you know, sometimes unpalatable truth. वो कभी-कभी प्रेम से हमारी मदद करना चाहते हैं शांतमय तरीके से, लेकिन कभी-कभी वो हमें कड़वा सत्य भी कहते हैं। I remember I went to meet one Maharaj, I won't mention his name, and I just was trying to like have like friendly relationship with him. मुझे याद है मैं एक बार एक महाराज से मिला और मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं उनसे एक दोस्ताना रवैया रखना चाहता था। And the whole time he's acting like he's a Brijavasi and he's like, you know, in Krishna Lila and he's you know, Raganuga Bhakta. He like trying to sell me this thing and he doesn't even know how to just be like honest, straightforward person, you know. तो ये व्यक्ति पूरे This समय big drama, emotional drama. तो ये पूरे समय जो है हमेशा ये नाटक करता रहता था कि मैं एक ब्रजवासी हूँ, कृष्ण लीला में हूँ, और बल्कि उस व्यक्ति को इतना भी नहीं पता कि कैसे सरलता से अपने बात को रखा जाए, और पूरे समय बस नाटक कर रहा है अपने आप का। So this like crazy fellow. ये पागल व्यक्ति है। And he has no guru to say this isn't real, Maharaj. और उनके पास कोई गुरु नहीं है ये बताने के लिए कि ये असल में सच्चाई नहीं है महाराज। You're not on that platform. आप उस स्तर पे नहीं हैं। And then he's surrounding with similar-minded people, and they're all telling each other how advanced they are. So who's going to help these people? तो
तो और वो उन्हीं लोगों के बीच में हमेशा रहता है जो हमेशा उनको बताते रहते हैं कि आप बहुत उन्नत भक्त हैं, तो उनको कोई बताने के लिए नहीं है सच्चाई। They're all lost. तो The blind leading the blind. वो सब भटके हुए हैं, अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहे हैं। Right? They do this the kirtan mela, तो ये जो कीर्तन and they मेला all करते put a हैं, T-shirt on. I lost my heart in Vrindavan. तो ये सब जो कीर्तन मेला करते हैं और सभी टी शर्ट पहन कर आते हैं, मैंने अपना हृदय जो है वृंदावन में खो दिया। And they're doing smoking pot and doing all craziness, but they lost their heart in Vrindavan. You know, come to the kirtan mela. वो पूरी तरह नशा करते हैं और स्मोक करते हैं और वो आके कीर्तन मेला में नाटक करते हैं। And then they were all acting like gopis, like, oh, you know, crying in the mood of separation, you know, and they're all sitting there, like, you know, I was going, oh, all the little kids are crying now, you know. This is a drama, you know. और वो कीर्तन में गोपियों की तरह नाटक करते हैं रोने का, कृष्ण के विरह में जिस तरह गोपियाँ रोती है, और मैं वहाँ जाके जब देखता था मैं कहता देखो बच्चे रोना शुरू करेंगे। They're brainwashed. उनका जो है दिमागी This is like type of brainwashing, you know. उनका ब्रेन वॉशिंग किया गया है। Oh, you know, you don't even have a guru. You're not even started the process, right? Now you're a gopi in separation. I mean, give me a break, you know. अपने आध्यात्मिक जीवन शुरू भी नहीं किया, आपके पास गुरु भी नहीं है और गोपी के भाव में आके नाटक कर रहे हैं। मुझे थोड़ा समय दीजिए। It's so cheap, you know. ये इतना सस्ता नहीं। You didn't get the first installment of mercy. आपको कृष्ण की पहली कृपा भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। And then you're going to jump to 10th canto, Srimad Bhagavatam? और आप श्रीमद् भागवतम के सीधे 10वें स्कंद में कूदेंगे। Go all the way. Forget about Baba, man. We're going to prema, mood of separation. भावा को भी भूल जाओ, भाव स्तर को। हम सीधा प्रेम, जो विरह का भाव है उसमें हम हैं। Who cares about Nishta, Ruchi, Bhava? Let's just go right from not even a Dao Shraddha. Let's skip a Dao Shraddha also. भूल जाओ रुचि, आसक्ति, निष्ठा, इसको भी सीधा प्रेम है। यहाँ तक कि अदाउ श्रद्धा को भी भूल जाओ, सीधे प्रेमा पे कूदना है। Why waste time with the Dao Shraddha, you know? अदाउ श्रद्धा में समय क्यों बर्बाद करना? Let's just leap to prema, you know, mood of separation. सीधा प्रेमा में कूदते हैं, विरह के भाव में। And nobody correcting them. और कोई उनको सही करने के लिए नहीं है। Nobody helping them. कोई उनकी मदद They're नहीं करता। lost and nobody's helping them. वो भटके हुए हैं और उनकी कोई मदद Because नहीं the करता। leaders are lost. क्योंकि जो नेता हैं वो भी भटके हुए हैं। And if you say that, oh, he's offending the pure devotees, you know. और अगर आप ये ऐसा कहेंगे तो वो कहेंगे वो ये शुद्ध भक्ति के प्रति अपराध कर रहा है। He's an aparadi. ये अपराधी है। You know, there's a saying, like in English, they have a saying like, get real. अंग्रेजी में एक कहावत है, असल हो जाइए। You know, get real, Maharaj. असल हो जाइए महाराज। Let's start there. वहाँ से शुरुआत करते हैं। Actually, Krishna says in Transcendental Platform, the first layer, the foundation of that transcendental platform, beyond the modes of material nature, is utter and complete humility and honesty. कृष्ण बताते हैं ये जो दिव्य स्तर का जो नींव है, ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से विनम्रता, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। So you're going to not reach even that platform, which is the beginning of transcendental life, and then you're going to just artificially think you're practicing Raganuga in the mood of separation of the topmost Vaishnava gopis? तो आप अभी तक This is a criminal, offensive. तो अगर आप उस पूर्ण विनम्रता के स्तर पर भी नहीं आए हैं जो पूरे भौतिक गुणों के से ऊपर है और आप गोपी के भाव में रागानुगा भाव में सोचते हैं खुद को, तो आप एक तरह से अपराधी हैं। Anyway, I don't want to say too much about that, but it's not real, I'll tell you. मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बस It's all a drama, it's all, you know, come to the mela, you know, the kirtan mela. ये सब बस नाटक है, बस आइए कीर्तन मेला में आइए। And they say, okay, it costs you 900 rupees, you know. और कहते हैं कि हाँ आपको 900 रुपये लगेंगे इसमें। And then will you be taking prasadam also?
पूछते हैं कि आप प्रसाद भी लेंगे? Okay, that's 200 rupees. 200 रुपये Okay. उसका भी होगा। And did you want the darshan of the guru? आपको गुरु का दर्शन भी चाहिए? Okay, that's another 500 rupees. उसका और 500 रुपये होगा। And did you want a garland and a cookie? आपको जो है माला और कुकी भी चाहिए? Okay, right. Then they give you the bill to go to the kirtan mela. फिर आप बिल करते हैं कीर्तन मेला में जाने के So लिए, you can act like a gopi in the mood of separation. ताकि आप गोपी की तरह नाटक कर सकें जो विरह के भाव में। This is all going on, isn't it? I'm not making this up. ये सब चल रहा है, मैं ये सब बना नहीं रहा हूँ अपने से। Prabhupada was so happy. He said, we're giving the highest thing. We're not charging anybody. प्रभुपाद कहते थे, वो बहुत खुशी से कहते थे कि हम सबसे ऊंचा चीज दे रहे हैं और हम किसी से एक पैसा भी नहीं ले रहे। Free of charge. Come, chant, dance, take prasad, go back to garden. फ्री में आओ, नाचो, कीर्तन करो, प्रसाद दो, भगवत धाम जाओ। Oh, you want to go to the kirtan? You have invitation? आपको कीर्तन में जाना है, You have आपको coupon? निमंत्रण कूपन मिला है आपको? No, I'm not advanced enough. I didn't get the coupon. मैं उतना उन्नत नहीं हूँ, मुझे कूपन नहीं दिया गया। Now you see why everybody loves me? आप देख सकते हैं क्यों लोग मुझे प्रेम करते हैं। Yeah, I come to the temple, like they roll out the red carpet for me, you know. मैं मंदिर जाता हूँ, मेरे लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। They don't want to hear the truth. वो सत्य नहीं सुनना चाहते हैं। And if you want to be cheated, then there's cheaters and the cheated. और अगर आप ठगे जाना चाहते हैं तो ठगने वाले भी हैं। You want to get the topmost thing and not understand it or pay the price for it. That's a cheating. आप सबसे ऊंचा चीज चाहते हैं और आप ये समझना नहीं चाहते कि आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी आपको, तो ये एक तरह का ठगना है। You think it's so artificial, cheap thing? क्या आपको लगता है ये इतना कृत्रिम चीज है, इतना सस्ता चीज है? You got to get rid of karma and jnana. You got to come to Shuddha Bhakti, Prem Bhakti in order to realize Krishna. आपको कर्म ज्ञान से भी मुक्त होना होगा, शुद्ध भक्ति के स्तर पे आना होगा कृष्ण को समझने के लिए। Krishna says, you come with this karma, this jnana, these other desires, I'll hide myself from you. कृष्ण कहते हैं अगर आप कर्म ज्ञान और इस तरह की इच्छाओं से मेरे पास आएंगे तो मैं अपने आप को ढक लूंगा। So without pure devotional service, Krishna says, I'll just hide myself from you. तो कृष्ण बताते हैं बिना शुद्ध भक्ति की इच्छा के मैं अपने आप को छुपा लूंगा। My Gurudev Srila Govinda Swami, many times he said, you cannot cheat Krishna. मेरे गुरुदेव श्री गोविंद महाराज कई बार कहा करते थे, आप कृष्ण को ठग नहीं सकते। You cannot cheat him. आप उनको ठग नहीं You सकते। cannot cheat the system. आप व्यवस्था को ठग नहीं सकते। Because that system is coming from Krishna. क्योंकि ये व्यवस्था कृष्ण से आ रही है। So you think you can cheat Krishna or Krishna's system? You're just a fool. तो अगर आप ये सोचते हैं आप कृष्ण की व्यवस्था कृष्ण को ठग सकते हैं तो आप एक मूर्ख हैं। Or a rascal. Prabhupada said you're a rascal. This is rascaldom. प्रभुपाद कहते हैं आप बदमाश हैं, ये बदमाशी है। But if you say that, it's not politically correct. लेकिन अगर आप ये कहेंगे तो ये राजनीतिक रूप से सही नहीं है। That's why I love Srila Govinda Swami, because he was not politically correct. इसलिए मैं श्री गोविंद स्वामी महाराज से बहुत प्रेम करता था क्योंकि वो राजनीतिक रूप से सही बात नहीं कहते थे। He just speak the truth, you know, unpalatable truth as it is. वो कड़वा सच जैसा है वैसा सुनाते थे लोग। He didn't care about his position in the institution, nothing. वो संस्था में अपने पद की चिंता नहीं करते थे किसी भी चीज की। He didn't worry about it, didn't care about it, you know. इसके कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। Whether you like me or not like me. आप मुझे पसंद करें या ना पसंद करें। No compromise. कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। I love that about him. That's what I wanted. ये इस बात से मुझे उनसे बहुत प्रेम था, मैं उनसे बहुत प्रेम करता था इस बात पे। One devotee said, "Oh Maharaj, you know, you could be pretty good devotee. Only problem is you have to learn Indian politics." एक व्यक्ति ने एक बार मुझे कहा कि आप एक बहुत अच्छे भक्त बन सकते हैं अगर आप बस संस्था में अगर आप बस भारतीय राजनीति सीख लें। And Indian politics is a whole nother level of politics, man. और भारतीय राजनीति एक अलग ही लेवल का राजनीति। These American politicians, it's a joke compared to Indian politicians, man. ये अमेरिकन और विदेशी राजनीति जो है मजाक है बस भारतीय राजनीति के साथ। I lived many years in India and I watch how they are doing and I watch these American politicians, it's a joke.
is an absolute joke. मैंने देखा जब भारत में रहा और भारतीय राजनीतिज्ञ को देखा और जब मैंने अमेरिकन राजनीतिज्ञ और उनके राजनीति को देखा, उनका राजनीति मजाक था भारतीय राजनीति के सामने। Just a bunch of fools, you know. देखने में लग रहा था कि वो बेवकूफ लोग हैं। But I would have committees of devotees in the institution coming to my room and like trying to force me to learn Indian politics. I said, this is the one thing that you're missing, you know. और भक्त लोग This कमेटी is बना why you're not advancing in the institution nicely, you know. और भक्त लोग कमेटी बनाकर मेरे पास आते थे रूम में और मुझ पे पूरा जोर डालते थे, सब दबाव डालते थे कि आप भारतीय राजनीति सीखो, इसके बिना आप संस्था में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। They say, you know, you're too like straightforward, you कहते know. आप थोड़ा ज़्यादा ही सीधे-सीधे बात करते हो। You're too honest, you're too blunt, it's too blunt. आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, ज़्यादा ईमानदारी है ये। It's seen as like uncultured. इसको थोड़ा असभ्य मानते हैं। You have to speak in a more like, you know, kind of like a snake, you know. आपको थोड़ा ऐसे सांप की तरह थोड़ा बात करना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा। And I said, I cannot speak like that, I'm sorry. मैंने कहा मुझे माफ कीजिएगा, मैं My इस तरह से बात Gurudev नहीं didn't करता। speak like मेरे that. गुरु He's ऐसे from बात- India. वो भी भारत से थे। Prabhupada spoke the absolute truth. Prabhupada said, I'll take you to the Mayavadis, take a boot to kick in your face. प्रभुपाद भी इस तरह कड़वा सत्य कहते थे। वो कहते थे मायावादियों को एक जूता लो और इनके मुंह पे मारो। What kind of Indian politics is that? ये किस तरह की भारतीय राजनीति है? So when they said like India, you need to learn Indian politics, I said, where does it say in the Bhagavatam I have to learn Indian politics to advance in devotional service, you know? तो उन्होंने जब मुझसे कहा कि मुझे भारतीय राजनीति सीखनी है, तो मैंने उनसे पूछा श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहाँ बताया गया है कि मुझे भक्ति के पथ में, शुद्ध भक्ति के पथ में उन्नति करने के लिए भारतीय राजनीति सीखने की जरूरत है। This is all concoction. ये सब मनगढ़ंत चीजें। Prabhupada, many places Prabhupada was saying that many people want to glorify me, Prabhupada was saying. प्रभुपाद कई बार कहते हैं कि कई लोग मेरा गुणगान करते हैं, यशगान करते हैं। And they want to say that I did so many wonderful things. और वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे अद्भुत कारनामे किए। But if you want to give me one credit, लेकिन अगर आप मुझे एक क्रेडिट देना चाहते हैं, you can give me one credit आप उस एक क्रेडिट दे सकते हैं। that what I heard and what I explained, I didn't add anything and I didn't subtract anything from it. कि जो मैंने सुना और जो मैंने लोगों को बताया उसमें ना तो मैंने कुछ जोड़ा ना मैंने कुछ घटाया, मैंने उसको यथारूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। That's how he became successful. इस तरह से वो सफल बने। Prabhupada said, problem with especially Westerners, you think you're very intelligent and you always want to change everything. तुम प्रभुपाद कहते हैं तुम पश्चिमी लोगों की यही समस्या है कि तुम सोचते हो तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम हर चीज को बदलना चाहते हो। You're always adding something, you're subtracting something, you're manufacturing something, concocting something. This spoils the whole thing. तुम लोग जो है हमेशा कुछ न कुछ जोड़ते हो, कुछ घटाते हो, कुछ निर्माण करते हो और ये सब सारा कुछ ये सारी चीज़ों को बर्बाद कर देते हो। Just Prabhupada said, just do exactly what I'm doing. प्रभुपाद कहते थे बस वो करो जो मैंने किया। If you can't add to that, then just at least maintain what I'm doing. अगर आप उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उस चीज़ को जारी रखिए जो मैंने किया। Now they're not doing. अब वो कर नहीं रहे। Now they have bridge preaching. अब वो जो है ब्रिज प्रीचिंग कर रहे हैं। Right, worshiping the demigods. देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। Doing yoga with men and ladies, half dressed. आधे कपड़े पहन के स्त्री पुरुष जो है योगा कर रहे हैं। Psychology classes. मनोवैज्ञानिक कक्षाएं हो रही हैं। Isn't it? ऐसा हो रहा है। Prabhupada said, don't do this. प्रभुपाद ने कहा था ये सब चीजें मत करना। Don't spoil it. इसको बर्बाद मत करना। And these people say, no, these people, this is what they need to do to come to bhakti. और लोग कह रहे हैं कि नहीं इनको ये करने की जरूरत है ताकि वो भक्ति के स्तर पे आ सके। This is not. If Prabhupada thought that was required, he would have said like that. अगर प्रभुपाद ऐसा सोचते कि इसकी जरूरत है तो वो ऐसा कहते हैं इनकी जरूरत है। He said, don't do like उन्होंने कहा that. था ऐसा मत करना। And they're ignoring. और उन्होंने नकार दिया। They think they know better. वो सोचते हैं वो ज्यादा जानते हैं। Because Prabhupada said, purity is the force. प्रभुपाद कहते हैं शुद्धता में बल है। If they don't have purity and they don't have shakti, they're not empowered, then you have to concoct some other type of procedure. अगर आपके पास शुद्धता नहीं है, आपके पास शक्ति नहीं है, तो आपको किसी अन्य प्रक्रिया का निर्माण करना होगा। Any other thing? कोई और चीज? This is why I'm so popular in ISKCON. इसलिए मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ ISKCON में। Yeah, they love me. मुझे बहुत प्रेम करते हैं।
Yes, sir. Hare Krishna Gurudev. Haribo. Gurudev, while chanting, there are many thoughts which crosses my mind. Many thoughts? That's thoughts? Thoughts. Thoughts, ideas. Thoughts? That's so surprising to hear that. सुनने में बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है। He has many thoughts. बहुत विचार है About crossing his mind. इसके दिमाग पे से This गुजरते is हैं। shocking information. बहुत आश्चर्यचकित करने वाला जानकारी दे रहा है। Did you just figure that out now? अभी पता चला आपको? Oh, you knew about that. वो आपको पता था पहले से? Not always, but sometimes while I chant, so thoughts and ideas come to mind. It feels like You just have to cut off your head. That's all. अपना बस सर काट लो। Just take your head, throw it somewhere else. You'll be all right. अपना सर काट के फेंक दो कहीं। Somebody will quote me. कोई मुझे कोर्ट में ले जाएगा। Maharaj, he gave this class and he's telling everybody to commit suicide and cut off their head. महाराज जो क्लास दे रहे हैं कहते हैं अपना सुसाइड आत्महत्या कर लो, अपना सर काट के फेंक दो, ऐसा क्लास दे रहे हैं। He was supposed to say just chant Hare Krishna Maha Mantra and instead he said cut off your head. उसको बस इतना कहना चाहिए था हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, लेकिन वो कह रहे लोगों अपना सर काट लो। We need to hear better information. तो उनका प्रभु का सवाल है कि कई बार मैं जप करते समय विशेषकर मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। If we get better information and better intelligence, which is superior, then you can say this other thing is useless, stupid. तो गुरुदेव बता रहे हैं अगर आपके पास कोई बेहतर जानकारी है, बेहतर बुद्धि है आपके पास, तब आप कह सकते हैं ये जो चीज़ें हैं ये सब बेकार है जो मेरे दिमाग में आ रही है। So while we're busy hearing Krishna, Sadhu, Guru, Vaishnava, Shastra, in those moments, we're not hearing Maya. तो जिस भी समय में हम Supposed to be. पूरी तरह व्यस्त हैं कृष्णा, साधु, गुरु, वैष्णव के बारे में सुनने के लिए, उनकी चीज़ों को सुनने के लिए, तो उस समय हम इन चीज़ों से मुक्त होते हैं, इन चीज़ों को हम नहीं सुन पाते। So stay in association with devotees who are hearing and chanting about Krishna, then you have the best chance to not listen to Maya. तो हमेशा उन भक्तों के संग में रहिए जो श्रवण कीर्तन को समर्पित हैं, तो आपके पास सबसे श्रेष्ठ मौका है कि आप इन विचारों से बच सकते हैं। And wherever Krishna is like the sun, and Maya is like the darkness. और जहाँ भी कृष्ण है, कृष्ण सूर्य के जैसे हैं, माया जो है अंधकार के जैसी। So if we associate with devotees, Vaishnavas, and hear and chant about Krishna, and Krishna manifest in that association, then Maya will just leave you alone. तो अगर आप भक्तों के साथ संग में हैं, उनके साथ श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो माया उस संग में प्रकट होती है, कृष्ण उस संग में प्रकट होते हैं, और माया वहाँ से छोड़कर चली जाएगी। She cannot stand in front of Krishna. वो कृष्ण के सामने खड़ी नहीं हो सकती। And Krishna has no fear, he's fearless. और कृष्ण के पास कोई भय नहीं है, वो भय मुक्त है। And Krishna's devotees are fearless. कृष्ण के भक्त भी भय मुक्त हैं। So if all your fear and anxiety goes away, then you become peaceful and happy. तो सारी आपकी भय चिंताएं जब चली जाएंगी, तो आप शांत और सुखी हो जाएंगे। Then you don't have to be harassed by all of this other nonsense. तो फिर आपको ये जो अलग ये सारी बकवास है, आपको प्रताड़ित नहीं करेगी। Association with Krishna, Krishna's devotees, hearing higher intelligence and more beneficial information and direction, this will overcome all of this other chatter, you know. कृष्ण के भक्त के संग में जब हम ऊंचे ऊंचे विचार और ऊंचे इन जानकारियों को सुनते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें छोड़ देंगी। Otherwise it's said the idle mind is devil's workshop. वरना कहते हैं खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। So if we're not fully engaged, intelligence, mind and senses, then definitely Maya will come in. तो अगर हम पूरी तरह से व्यस्त नहीं हैं मन, बुद्धि और इंद्रियों से, तो जो माया वहाँ पे प्रवेश करेगी। So Prabhupada said if you want to overcome that lust and you want to overcome all this influence of Maya, use your intelligence, mind and senses and stay fully engaged in devotional service, serving Krishna, Krishna's devotees. तो श्री प्रभुपाद बताते हैं अगर आप इससे मुक्त होना चाहते हैं, माया से मुक्त होना चाहते हैं, तो अपने मन, इंद्रिय और बुद्धि को कृष्ण की सेवा में पूरी तरह लगा दीजिए, तो ये सब चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। That sincere, serious surrender and service, Prabhupada says Krishna will order Maya to leave you alone. अगर आप इस तरह से गंभीर एकनिष्ठ तरीके से कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, तो कृष्ण माया को कहेंगे इस व्यक्ति को छोड़ दो।
Sometimes I ask devotees, how are you? They say, oh, I'm struggling, I'm fighting with the Maya. कभी-कभी मैं भक्तों से पूछता हूँ आप कैसा है, आप कैसे हैं, तो कुछ वो कहते हैं कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं माया के साथ युद्ध कर रहा हूँ. How are you going to fight with Maya? आप माया के साथ क्या युद्ध करेंगे? Krishna says, Mama Maya. कृष्ण कहते हैं मेरी माया. It's my Maya. मेरी माया. I'm fighting with Maya. मैं माया से लड़ाई कर रहा हूँ. No, Krishna says, you surrender to me, I'll tell Maya to leave you alone. Bas. कृष्ण कहते हैं आप बस मुझे शरणागत करो, मैं माया को कहूँगा इसको छोड़ दो. There's no fighting with Maya and not surrendering to Krishna. कोई माया के साथ लड़ाई नहीं है और कृष्ण को शरणागत नहीं करेंगे तो. That's another nonsense. ये एक और बकवास है. Oh, I'm trying to control my mind and my senses. और मैं अपने मन और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ. You think you can control Krishna's energy? आप सोचते हैं आप कृष्ण के शक्ति को कंट्रोल नियंत्रण में कर सकते हैं? That mind, intelligence, senses, those belong to Krishna. That's Krishna's energy. ये मन, बुद्धि और इंद्रिय ये कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण की है. He's Rishikesh, वो ऋषिकेश है. master of the mind and the senses. मन और इंद्रिय के स्वामी हैं. We think, no, my body, my mind, my senses, I, me and mine, right? That's a Maya. हम सोचते हैं मेरा शरीर, मेरा मन, ये सब मैं, मेरा, ये सब कुछ माया है. So it says, you surrender to Krishna, you surrender to Rishikesh, Krishna himself will purify and control your mind and your senses. And tell Maya to leave you alone. अगर आप कृष्ण को शरणागत करते हैं, ऋषिकेश को शरणागत करते हैं जो मन और इंद्रिय के स्वामी हैं, तो कृष्ण माया को कहेंगे इस व्यक्ति को छोड़ दो. Then all these thoughts and all of these desires, everything will become less, gone. और ये सारे विचार, सारी इच्छाएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी और अंत में पूरी तरह चली जाएंगी. That's the process. यही प्रक्रिया है. Then you'll be more peaceful. तब आप और ज़्यादा शांत हो जाएंगे. We need some better information. We need to think about some better, higher thing. हमें बेहतर जानकारी की ज़रूरत है, हमें कुछ बेहतर सोचने की ज़रूरत है. Otherwise, we become very narrow, very like a miserly, narrow-minded. हम बहुत कृपण और बहुत सक्रिय सोच के वाले लोग हो जाते हैं. Selfish. बहुत मतलबी. Self-centered. मतलबीपन. So miserly, selfish, self-centered people, they can never be happy. They can never make anybody happy. कृपण और मतलबीपन वाले लोग कभी शांत और सुखी नहीं हो पाएंगे. We're supposed to become Mahatma. We're supposed to be broad-minded. हमें महात्मा होना चाहिए, बड़े खुले विचार वाले. Not Duratma. दुरात्मा नहीं. All right? Yeah. Hare Krishna Gurudev. Hari-katha. Is the initial effort to increase the desire to serve Krishna coming from body, platform, mind, or some causeless mercy? The initial effort to serve Krishna, increase the desire to serve Krishna. If you have desire to serve Krishna, is it coming from your body or your mind or your soul? Or it is coming from soul. You want, is Krishna your order carrier? Do you want Krishna to fulfill all your material desires? तो प्रभु का सवाल है कि जो शुरुआत की इच्छा आती है भगवान की सेवा करने की शुरुआती इच्छा, तो ये मन से आती है, शरीर से आती है या आत्मा से आती है? तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि कृष्ण आपके सारे भौतिक इच्छाओं को पूरा करें? So let's define what does it mean to serve Krishna. तो चलिए हम पहले ये इस बात का पता लगाते हैं कि कृष्ण की सेवा करने का असल मतलब क्या है. It means for Krishna's service, Krishna's pleasure. इसका मतलब कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए. So if your soul can be convinced enough to want to serve and please Krishna, Krishna's mind, Krishna's senses, for Krishna's pleasure, that is definition of bhakti, devotional service. तो भक्ति की असल परिभाषा ये है कि जब आप जो कुछ कर रहे हो कृष्ण के मन, कृष्ण के इंद्रिय, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, वो है कृष्ण भक्ति. But if you just say, okay, I want to go to pray to God, because I need some money. लेकिन आप कहेंगे कि मैं भगवान के पास जाके प्रार्थना करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ पैसा चाहिए. So that's not devotional service. You're motivated like a businessman. तो ये भक्ति नहीं है. आपका कुछ उद्देश्य है, आप व्यापारी की तरह हैं. So you cannot use Krishna. तो आप कृष्ण का इस्तेमाल नहीं कर सकते. That's not devotional service. ये भक्ति नहीं है.
So what is the motivation for going to Krishna? तो कृष्ण के पास जाने का उद्देश्य क्या है? What is the ultimate motivation and goal for coming to Krishna? अंतिम उद्देश्य लक्ष्य क्या है आपका कृष्ण के पास आने के लिए? That has to be understood. And Krishna will know it. और ये समझना चाहिए और कृष्ण इस बात को समझ जाएंगे. And Krishna says, as you surrender to me, I reward you accordingly. और कृष्ण कहते हैं जिस तरह आप मुझे शरणागत करेंगे मैं वैसा ही आपको फल दूंगा. The problem is, because of false ego and pride, we think we're so surrendered and we're so devotional and with so much devotional service we're doing. तो क्योंकि मिथ्या अहंकार और दंभ में हम ये सोचते हैं कि हम बहुत शरणागत हैं, हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति के कार्य में लगे हुए हैं. We have very high impression of ourselves. We think we're very sincere, we're very special, we're very devotional. हम सोचते हैं कि हम बहुत गंभीर हैं, हम बहुत ईमानदार हैं, हम बहुत भक्तिमय हैं. Because nobody is telling us differently either. और सभी लोग भी हमें, बाकी लोग भी हमें कुछ और अलग चीज़ नहीं बता रहे हैं. But then the results that we're getting is not matching. लेकिन जो हमें फल मिल रहा है वो मेल नहीं खा रहा है. So that creates confusion because it means we'll have a false expectation. तो इसके बाद भ्रम पैदा होता है क्योंकि हमने जो है गलत उम्मीद लगा बैठी है. So if we miscalculate our adhikar, our actual standing or qualification, then the result that doesn't meet that will cause you to have doubts and it will undermine you and make you morose, depressed. अगर आपने अपनी आलोचना गलत कर ली है तो जो आपको फल मिलेंगे उससे आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, आप असंतुष्ट रहेंगे. इससे आपके मन में और आपके दृढ़ निश्चय में संदेह उत्पन्न होंगे. So the pride, false ego is type of blindness where we cannot understand our actual adhikar, spiritual adhikar. तो मिथ्या अहंकार में हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारा असल में आध्यात्मिक अधिकार क्या है. So we need to understand from Krishna through the Guru Sadhu Shastra, what is our actual position. तो कृष्ण गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से हमें पहले ये समझना होगा हमारा वास्तविक स्थान क्या है. And how much and what is the quality of our surrender. और हमारी शरणागति का क्या गुण है. And of course Krishna is the witness and the judge of the quantity and quality of our surrender. और कृष्ण उसके गवाह और न्याय करेंगे कि हमारे शरणागति का क्या स्तर है. And then Krishna said, then I reward you accordingly. और कृष्ण कहते हैं मैं उसी रूप में आपको फल प्रदान करूँगा. But what if we think we should be rewarded so much from Krishna? लेकिन अगर हम सोचें कि हमें कृष्ण से बहुत फल मिलना चाहिए, but we're not getting that reward, लेकिन हमें वो फल नहीं मिल रहा, won't that make you confused? तो ऐसा नहीं आपके अंदर ये भ्रम पैदा होगा? Don't we think we deserve more? आप सोचेंगे नहीं मैं तो और ज़्यादा killing myself, I gave up everything, I did so much seva, I'm trying so hard, right? You'll just constantly be saying like this. आप हमेशा बस ये कहते रहेंगे मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, अपने आप को बस मार रहा हूँ और बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, हमेशा आप ऐसा सोचते रहेंगे. But we're missing the point that Krishna is the witness and the judge of the quality and the motivation of our surrender. लेकिन हम इस And चीज़ को why we're doing. लेकिन हम इस चीज़ को भूल रहे हैं कि कृष्ण इस बात के गवाह है, वो इस बात का न्याय करेंगे कि हमारी सेवा का क्या गुणवत्ता है. So we have a quality of surrendering problem. तो हमारे पास शरणागति में हमारी गुणवत्ता नहीं है. Right? Krishna says, if you surrender to me, I release you from Maya. Well, I'm a devotee, I'm surrendered to Krishna. Why are you not releasing me from Maya? कृष्णा कहते हैं अगर आप मुझे शरणागत करेंगे तो मैं आपको माया से मुक्त कर दूंगा. और हम सोचते हैं अगर मैं कृष्णा को शरणागत हो रहा हूँ तो कृष्णा मुझे माया से मुक्त क्यों नहीं कर रहे हैं. So we're assuming a lot. तो हम कुछ ज़्यादा ही सोच ले रहे हैं अपने बारे में. My Gurudev many times he said, you know, your surrender, your so-called surrender is partial surrender. मेरे गुरुदेव कई बार कहा करते थे आपका जो शरणागति, जो नाम का शरणागति, ये बहुत आंशिक है और कृत्रिम है. So sometimes you're surrendering and sometimes, most times you're not surrendering. तो कुछ समय आप शरणागत कर रहे हैं और ज़्यादातर समय आप शरणागत नहीं करते हैं. So it's a partial surrender. ये आंशिक शरणागति. That's not the real surrender. ये असल शरणागति नहीं है. Or conditional surrender, like I'll surrender to you, Krishna, but everything better go my way.
और उसके बाद है नियम और शर्तों के आधार पर शरणागति। अगर सब कुछ वैसा गुजरेगा जैसा मैं चाहता हूँ तो मैं शरणागत करूँगा। So if everything's lining up and all benefit is coming to me, then I'll continue to surrender to you. तो वो सारा फायदा जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिल रहा है तो मैं शरणागत करूँगा। And if it's not going according to my plan and I'm not getting what I expected from this surrender, then I don't know if I want to surrender to you. और सब कुछ अगर मेरी योजना के हिसाब से नहीं चल रहा और मुझे वो चीज़ नहीं मिल रहा जिसकी मैंने उम्मीद लगाई है इससे, तो मुझे नहीं पता मैं और शरणागत करूँगा या नहीं। That means conditional surrender. इसका मतलब नियम शर्तों के आधार पर शरणागति है। That is not real surrender. ये भी असल शरणागति नहीं है। Or if we're very sentimental, artificially we're thinking, oh yes, everything belongs to Krishna. और अगर हम बहुत भावपूर्वक रूप से कहते हैं वो सब कुछ कृष्ण के लिए है। Right? So artificial, sentimental, that's not real. कृत्रिम रूप से और भावपूर्ण रूप से ये असल शरणागति नहीं है। So that means there's a problem with the quality of our surrender. इसका मतलब समस्या है हमारी शरणागति की गुणवत्ता में। But without understanding those subtleties, we'll just think, well, I'm fully surrendered as best that I can. लेकिन इन सूक्ष्म चीजों को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम सोचेंगे हम अपना श्रेष्ठ कर रहे हैं, हमारी शरणागति में कोई कमी नहीं है। So why I'm not getting rewarded? तो मुझे क्यों फल नहीं मिल रहा है? Then I don't think this process even really works then. फिर हम सोचते हैं वो हो सकता है ये प्रक्रिया काम ही नहीं करता है। Now I'm start doubting the whole thing. और फिर हम पूरे चीज पे ही संदेह करने लगते हैं। Because I don't like the so-called rewards I'm getting. I think I'm getting cheated. मुझे वो फल मिल रहा है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ठगा जा रहा हूँ, उसके लायक नहीं। You see? देखिए आप। So these are very subtle science. तो ये बहुत सूक्ष्म that all of these points have to be considered. ये सारे जो बिंदु हैं इन पे विचार किया जाना चाहिए। And if you get mercy of Krishna, mercy of bona fide Guru and Shastra, then we'll be able to begin to understand all of these points. अगर आपको कृष्ण गुरु और शास्त्र की कृपा मिलेगा तो आप इन सारे बातों को समझ पाएंगे। And we'll adjust our adhika, our understanding of our actual position or spiritual qualification. और हम अपना असल अधिकार, अपना आध्यात्मिक योग्यता समझ पाएंगे, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। Then we'll also give up this false expectation. तो ये हमने जो गलत उम्मीद लगा बैठी है इसको भी हम छोड़ देंगे। Because we don't deserve anything. क्योंकि हम किसी चीज के लायक Or नहीं we deserve less. या हम कम चीज के लायक हैं। Because there's a problem with the quantity and the quality of the surrender. क्योंकि जो मात्रा और गुणवत्ता में कमी है हमारी शरणागति की। Sometimes devotees, they don't want to hear all of this. They think it's too tedious, too technical. कभी-कभी भक्त जो है इन बातों को सुनना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है इसमें बहुत सारी जटिलता है, बहुत तकनीकी है इसमें। They're like sometimes, oh, this conversation give me like a headache, you know. कुछ लोग बोलते हैं इस My चर्चा head से मेरे is सर में like, दर्द होने लगा है। it's like too much information, you कुछ ज़्यादा know. ही जानकारी है इसमें। But it's a science. लेकिन This is the subtle science of Krishna consciousness. लेकिन ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है कृष्ण भावनामृत का। But hardly anybody is interested for hearing and learning and trying to understand those subtle points. लेकिन मुश्किल से ही कोई इस बात को सुनने के लिए तैयार है, समझने को तैयार है इन सूक्ष्म बातों को। That's the difficulty. ये समस्या है। But we keep trying anyway. लेकिन हम फिर भी प्रयास करते रहते हैं वैसे। Some may catch it, some may understand it. कुछ समझ पाएंगे, कुछ शायद पकड़ पाएंगे। Some may consider these points. कुछ शायद इन बातों पर विचार करेंगे। That I learned from my guru. जो मैंने अपने गुरु से सीखा। I never thought of all of these points on my own. मैंने कभी इन विचारों पे स्वयं पे कभी सोचा नहीं। He just patiently explained all of these things to me. वो उन्होंने धैर्यपूर्वक मुझे इन सारी चीजों को सिखाया। And he showed me in Srila Prabhupada's books and teachings how all of these points are there. और उन्होंने मुझे दिखाया श्रील प्रभुपाद जी की किताबों में कैसे ये सारी बातें उनकी किताबों में लिखी हैं। So I want to thank everybody for coming. You listened for a long time again to me. तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो यहाँ आए, उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और काफ़ी देर तक यहाँ सुना मुझे। And I feel much benefited. I hope you also got some benefit out of that. मुझे ऐसा लग रहा है मुझे काफ़ी फ़ायदा प्राप्त हुआ और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। I hope gradually you become more and more peaceful and happy. मुझे उम्मीद है धीरे धीरे आप और ज़्यादा शांत और सुखी होते जाएंगे। And I hope you will allow Krishna to convince you of what's in your best interest. और मुझे उम्मीद है आप कृष्ण को अनुमति देंगे, आपको आश्वस्त करें कि आपके लिए श्रेष्ठ क्या है। And that we may give up our foolishness or crookedness or, stubbornness and try to take this great opportunity seriously.
और हम शायद अपनी मूर्खता, अपना जिद्दीपन, अपना जटिलता, कुटिलता छोड़ देंगे ताकि हम इस प्रक्रिया को स्वीकार कर सकें। then I'll consider that our association has some meaning and some value. तो मैं समझूंगा हमारे संग का कुछ फायदा हुआ, कुछ मोल हुआ। I don't want to waste your time, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना and चाहता। I don't want you to waste my time. मैं आपको नहीं चाहता आप मेरा समय बर्बाद This करें। type of discussion has meant my Gurudev many times said this is for serious students. मेरे गुरुदेव कई बार कहा करते थे ये चर्चा जो है गंभीर व्यक्तियों के लिए है। So many times Gurudev say how many serious students are there? I don't know. तो मेरे गुरुदेव कई बार कहा करते थे कितने गंभीर यहाँ पर छात्र हैं मुझे पता नहीं। But if Krishna is making the Guru to speak it, there must be somebody who is meant to receive it. लेकिन अगर कृष्ण गुरु को कुछ बातें बुलवा रहे हैं तो अवश्य वो किसी व्यक्ति के लिए है। Prabhupada said that when you want to have child, the man must be potent and the woman must be fertile. Otherwise, you cannot have baby. You cannot become Krishnaized. श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं अगर बच्चे चाहिए तो पुरुष को जो है योग्य होना होगा और स्त्री को भी जो है योग्य होना होगा, उसके बिना जो है बच्चे उत्पन्न नहीं हो सकते। You won't be able to be impregnated with Krishna consciousness, Prabhupada said. तो प्रभुपाद बताते हैं आपके अंदर जो है बीज डाला जाना चाहिए कृष्ण भावनामृत So का। the speaker must be potent and qualified, authorized, empowered. तो जो वक्ता है उसको भी जो है प्रामाणिक होना होगा, सशक्त होना होगा। But the hearer must also be qualified और श्रोता को भी योग्य होना होगा and eager to learn and to hear and to receive that information as well. और उत्सुक होना होगा सीखने के लिए और उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए। And then that sincerity and seriousness, Krishna will understand that, and by His mercy, He'll shower mercy and blessing onto us. और कृष्ण उस उत्सुकता और उस ईमानदारी को देखेंगे और फिर वो अपनी कृपा बरसाएंगे वहाँ। Then the impossible becomes possible. तब जो है असंभव भी संभव हो सकता है। All right. So what is our consciousness, and what is our motivation? तो क्या हमारी चेतना है और क्या हमारा उद्देश्य है? That's what determines whether it's coming from the soul or whether it's coming from the bodily platform. तो ये निर्धारित करेगा क्या आत्मा से आ रहा है और क्या शरीर और मन के स्तर से आ रहा है। Does that answer your question? क्या इसने आपके सवाल का जवाब दिया? For now? अभी के लिए? Sure. Step by step. एक एक करके। Come every day. प्रत्येक दिन आइए। Right. Get purified. शुद्ध होइए। Pray to Krishna. कृष्ण से प्रार्थना These कीजिए। things gradually, everything He'll reveal to us. धीरे-धीरे वो सभी चीजें प्रकाशित करेंगे। Continue this question there small. Yeah. How can we true to ourselves? How what? How can we be true to ourselves? Surrender to Krishna. प्रभु का सवाल है कि हम स्वयं के साथ ईमानदार कैसे हो सकते हैं, स्वयं के साथ सच्चे कैसे हो सकते हैं? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कृष्ण को शरणागत कर दीजिए। There's nothing better you can do for yourself or the people in your life. आप स्वयं के लिए और अपने जीवन में जो लोग हैं उनके लिए आप इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं कर सकते। Let's face it, if we don't surrender to Krishna, we're not really very, very nice people. तो चलिए हम देखते हैं अगर हम कृष्ण को शरणागत नहीं हैं तो हम असल में बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। If we're selfish, self-centered, and just engaged in sinful activities and developing demoniac qualities, this is not very attractive, not helpful to us or anybody else. अगर हम बहुत मतलबी हैं, हम बहुत मतलबीपन है हमारे अंदर, हम पाप करने लगे हैं, आसुरी गुण हम प्रकट करते हैं, तो ये बहुत लोगों को ना तो आकर्षित करता है हम खुद को और ना हमारे जीवन में जो लोग हैं उनको आकर्षित करता है। So first we have to fix ourselves. तो पहले हमें खुद को ठीक करना होगा। Then we can be helpful to ourselves. तो हम स्वयं के लिए मददगार हो सकते हैं। And become the best version of ourselves by mercy of Guru and Krishna. और स्वयं का सबसे श्रेष्ठ हम बन सकते हैं गुरु कृष्ण की कृपा से। Then we're more qualified and capable to help other people, to benefit other people. तब हम ज़्यादा योग्य हो सकते हैं, ज़्यादा हमारे अंदर क्षमता आ सकती है अन्य लोगों की मदद करने But की। first we have to take the medicine, the treatment ourselves. तो लेकिन सबसे पहले हमें ये उपचार, ये दवाई खुद पे लगानी है। If we don't help ourselves, we cannot help anybody else. अगर हम स्वयं की मदद नहीं करेंगे हम किसी अन्य की भी मदद नहीं कर सकते। So first work on yourself and then think how to help other people. पहले स्वयं पे काम कीजिए, उसके बाद सोचिए कैसे दूसरों लोगों की मदद। Gradually, gradually. धीरे-धीरे। If we're useless to ourselves, how we can help anybody else? अगर हम स्वयं के लिए बेकार हैं, दूसरे की क्या मदद करेंगे? We can't even help ourselves. हम स्वयं की भी मदद नहीं कर How सकते। are you going to help anybody else? आप किसी और की क्या मदद करेंगे?
Right? They're suffering because of uncontrolled mind and senses. वो दुख भोग रहे हैं क्योंकि अब उनके मन इंद्रियां अनियंत्रित हैं And because of bad karma. और बुरे कर्म की वजह से. So if you can't help them to surrender to Krishna, destroy their karma, purify their mind and senses, how are you going to make them peaceful and happy? तो अगर आप उनके कृष्ण को शरणागत करने के लिए उनको नहीं बाध्य कर सकते तो कैसे उनके पाप कर्म से वो मुक्त हो पाएंगे, कैसे अपने मन और इंद्रियों को भी नियंत्रित कर पाएंगे? Not possible. संभव नहीं है. Okay, thank you everyone very much. Shri Shri Gaurnitai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaura Premanande. Thank you.